Once again, very good evening to all of you. So this session, we are going to see to write a good answer. What are the things that you need? So before writing any answer, I think we have discussed about so many live answer writing, like, NCSC, NCSC, Comptroller Auditor General. If this question is that, so why Comptroller Auditor General is called as public parts? Okay. And for example, question is like that: the Comptroller Auditor General is called as public parts. In light of above statement, discuss the challenges that are being faced by the CAG and discuss this way forward. So in that case, you should know why it is called public parts. You should know the 3, 4 point or 5 point regarding why it is called public parts, because it is auditing the account. It is providing, assistance to the CAG. It acts like a friend, philosopher, guide to the parliament. Okay? So all these things, because of that, we call this a public parts. Then you have to discuss about challenges क्या face कर रहा है, कौन-कौन challenges से face करो. Then you have to talk about way forward. For that, what do you need? Content ना. So without content, if you are expecting to write a good answer, it is not possible. For example, yesterday I have seen about the parliamentary committee. So I think सब मैं question evaluate कला बड़े मुझे जानी पड़ुची कि तुम्हारे content तुम्हें नहीं से ठीक है जी. तो first हमको कोई जिन सब पर focus करिया पड़ियो to develop good content. Okay. Once you are having the good content, then also it is not going to helpful to write a good answer. Next, what we need to understand context. कौन तक हम कौन थे? Please इसको भल से बुझिए. Context means, what is the demand of the question? The recording will be provided, don't worry. मैं PDF भी तुम से शेयर कर देबी. सब चीज जति मोतरा पॉसिबल हो मतलब हेल्प करिवि, don't worry. Then context आमे लिखि देला परे next we have to write in a presentation, good presentation. For example, you all are writing without having good points. You all are writing random without having heading, subheading, numbering, heading, subheading, so without underlining. So this is not good. You have to present in a good way. At least make some diagram, make some half moon diagram, इवोल्यूशन डायग्राम. मैंने आपको पूछा था कि इवोल्यूशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम, कोई भी ऐसे टाइप के आप लिख सकते थे ना, ऐसे करके फर्स्ट स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आर्टिकल 40, then you can start with, first you can talk about ancient, then you can talk about medieval, then you can talk about British period, then ऐसे से आप लिख सकते ना. नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस, मैं एक एक करके तुमको देखेबी, डोंट वरी. सब ऊपर हम कथा हवा. हम गोटे गोटे फास्ट आपको कहूची से जिंस को आपन ध्यान रखिया को पड़िबो, बहुत ध्यान रखिया पड़िबो. नेक्स्ट होची हमर प्रेजेंटेशन. कोन हमर? If you are having these three things very good way, then no one is going to stop you to get good marks. And one thing, please write in a good legible format. Legible format to kaise, how you are going to write. You just, whenever you are, without having any work, just write like that. ABCD, understanding, like that. You just need to write and improve your legibility. Okay. Some of the student, I think, handwriting is not that legible. I think today while evaluating an answer, I found that. Na? So in representation, you can use pie chart. Na? डायग्राम ना. मैं आपन को गोटे गोटे करी कहबी केमिति हमें करबा हैला कि एटा भारी इंपोर्टेंट कहीं ना मैं को बारंबार रिपीट आउ करिबिनी. गोटे थरो कहबी आपन भलसे टा सुनिबे. एंटायर आंसर राइटिंग जो तीनटा फ्रेमवर्क हमको पूरा का पूरा जो 3 मास 4 मास जा भी अछि, हमको पूरा ये तीनटा फ्रेमवर्क ऊपर काम करिया पड़िबो. तापर हम हो सकता है हमको फ्लो चार्ट मैं कहि देबी, सब गोटे एग्जांपल देबी. सो एक्सेट्रा हमको करिया पड़िबो. हम कंटेंट केमिति डेवलपमेंट करबा. देखो लक्ष्मीकांत वी कैन नॉट स्टडी, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर द लक्ष्मीकांत बिकॉज़ इट इज क्वाइट बल्की. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି କିଛି. ଗୋଟେ ମିନିଟ. Yes, this one. I think this PDF everyone is receiving that this PDF or not? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ PDF ମିଳିଛି ନା ମିଳିନି? ये जो हमरा एप्लीकेशन भितर अछि ମୁଁ ଏଠି पॉलिटी रे भी देइछि कंटेंट पाइना. स्टडी मटेरियल समरी ना समस्त को मिलिछि कि मिलिनी? ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଖୋଲି କେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତ ଆପଣ ଜଣା ପଡିବ. हाँ, এটা टिके मु मॉडिफाई कर देबी. काली संडे अछि, पूरा पॉलिटिक मु एकदम अपडेट कर देबी. आपन देखौ छी एटा आपन केमिति कंटेंट बनेबारे आपन हेल्प करिवो. फर्स्ट जो पॉइंट मैं आपन कहली हाउ टू डेवलप गुड कंटेंट, सेटा होची हमरो एई समरी नोट्स से आपन को बहुत हेल्पफुल होबो. केमिति देखो आपन यदि पढिबे जाय कि लक्ष्मीकांत को इट विल गिवन दिस 1773 is given in a bulky format which is not easy to remember na. So for that you can refer to this na. So you can say what are the provision of that. You have to remember there are 5 or 6 provision and that you have to remember like in a pentagon format. You have to read this much, but at the end you have to remember by having pentagon because 5 points. So what is this first point? So governor general, edge,
गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना. This is what point ना देखो गवर्नर ऑफ बेंगल इज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना with 4-member executive plus 4-member executive council. That is what you need to remember. That is what called development of good content. So like this is my first point. देखो मुझे कितने छोटे रह गया मत देखो मो माइंड रे मैपिंग करीबी गवर्नर ऑफ बेंगल एज ए गवर्नर जनरल मींस हेड ऑफ almost like we are giving more power to the governor general. Second is so name of that governor general is Warren Hastings. You can give example वारेन हास्टिंग ना वारेन हास्टिंग फर्स्ट इतना भी काफी है वारेन हास्टिंग दैट मच. सेकंड पॉइंट इज गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो यू कैन से गवर्नर जनरल जीजी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे subordinate to sub to Bengal. You have to remember like that entire content. You have to remember that. I think it is not more than कितने पेज अछि मैं तुमको कंटेंट देछि हार्डली 108 पेज मते को 108 पेज रे मन रखा केते इजी मते को तमरो लक्ष्मीकांत तमे यदि पढिबो दैट इज मोर देन 1000 पेज ताको मु तुमको एते समरी रे दे देछि काली मु एटा और भलसे करि देबी टिके काली मोर छुट्टी अछि काली संडे मु काली पूरा बसिबी सखाळू पूरा का पूरा 108 पेज को एकदम सिस्टमैटिक सिंक कर देबी कलरफुल कर देबी ताकि तो बडू पढिया पे भल लागिवो. तापरे एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता ना हम कि लिखि पे देखो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता ना कलकत्ता 1774. Then you have to study about prohibit the public servant from private trade. Empty, you have to remember all these things in a systematic and structured way, and then you have to keep on revising. मतलब को 100 पेज रो कंटेंट को पढ़िया ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିନକୁ ମୁଁ 20 पेज रो कंटेंट को पढ़ेबी ताले एटा 5 दिन गोटे सप्ताह सरिया कथा गोटे सप्ताह सइला पण ताको रिवीजन करो रिवीजन केमिति करिवो एम्प्टी पॉइंट फॉर्मेट रे कॉपी रे बसी के एम्प्टी बनेबो गोटे गोटे पॉइंट को माइंड रे मैपिंग करबा को पड़िबो देन ओनली इन एग्जाम द मोमेंट यू सी एनी क्वेश्चन गड़ यू ना देखो नहीं कि धड़ पॉइंट जो आसी जाय ना माइंड रे तभी आसी पारिवो जते बेले तमे एम्प्टी पढिथिबो एम देखो जेमति एई क्वेश्चन ता बहुत थरा रिपीटेडली पूछे कोटा कहलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बहुत थरा पचारी जी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी पचारी पारे बुझी पाले कि नहीं देखो मु पूरा तुमको पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे ही एटा डिजाइन करी छी देखो मनगर पचारा गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तुम देखो तुम लिखि पारिबो दिस इज अ लैंडमार्क रिफॉर्म दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर और द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर सबमिशन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट तो आपण मानकर इंट्रोडक्शन हे गला नहीं मते जो तो इंट्रोडक्शन हला परे तुम देखो प्रोविजन देखो किते बढ़िया क्या लिखा है देखो सब्जेक्ट को हमें डिवाइड करू सेंट्रल लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट सेमती तुम ड्रॉ करिवो सेमती तुम माइंड रे आ कॉपी रे भी ए सब जिंस ड्रॉ होबा दरकार हला कि माइंड रे तले पढुचो यू शुड नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम बाय नो जस्ट रीडिंग नो यू हैव टू ड्रॉ इन योर माइंड लाइक दैट ओके देन रेसिडुअरी पावर हमें काको दिखले Viceroy को देख So this is point. Then abolition of diarchy at the provinces, provincial autonomy and responsible government, adoption of the diarchy at the center. So just remember कितना छोटे-छोटे points देखो ये point को you have to after let's say you have studied it properly, then take a blank page and one by one points. What is the first point you have to recall? What is the second point? What is the third point? What is the fourth point? You have to do that continuously 6-7 times, then only everything will be printed in your mind. देखो मु तुमको लक्ष्मीकांत कोहुनी के पूरा बल्कि पढ़ो बट एटा तो पढ़ी हबो ना 100 पेज रो गोटे कंटेंट को मते को फास्ट रीडिंग रे टाइम लागिवो तमे ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर करिसो तुमको लागुची तुम पाकर नॉलेज है तुम पाकर नॉलेज अछि बट हमें कोन करूछंती वी आर डूइंग डेड रीडिंग तका हमें कोन कहती डेड रीडिंग हमें पढुचंती बट फॉर सेक ऑफ रीडिंग वी आर नॉट डूइंग एक्टिव रीडिंग हमें एक्टिवली इन्वॉल्व है कि पढु ना तो हमको गोटे गोटे जमी पढ़ले गोटे देखो वन ऑफ द प्रोविजन इज एस्टैब्लिश्ड ऑफ फेडरल कोर्ट इन 1937 देन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड central public service commission and provincial public service commission. Then we have RBI to control the currency and credit, and franchisee means election is extended to 10%. SOS means secretary of state council was abolished and created team of advisor to help the secretary of state. Extend the principle of communal electorate to depressed class women and labor. तापरे हमें कौन कले हमर जो डायरकी थिला प्रोविंशियल सबको अबॉलिश कले इन दैट प्लेस वी प्रोवाइड फॉर व्हाट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ठीक है तापरे हम कौन कले एडॉप्शन एट दी हम डायरकी एटा ए जगह रे कोर्ट इंट्रोड्यूस कले सेंटर रे तापरे हमें जो फर्स्ट पॉइंट जो है हम कौन कले एटा गोटे फेडरेशन बनेले फेडरेशन इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट बहुत क्लियर ना मते को तमे दिया कि लक्ष्मीकांत रु पढिबो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 केते कॉम्प्लेक्स हबो मो कहया कथा कंटेंट तुमको पढिया पई मु जो मटेरियल दोची प्लीज ताको बारंबार रिवीजन करो तुमको जदी लागुची किछि इनसा मिसिंग अछि तो एटी ऐड कर दियो
है कि यही जगह भी ऐड कर दियो एटी तुम यदि टैबलेट यूज कर ऐड कर पारो टैबलेट यूज कले एमती कर पारिबो है कि टैबलेट यूज कर आप एट भी लिखिपारे छोट छोट जिन ना छोट छोट पेनसिल लिखिपारे पॉइंट्स को ना तो गोटे ही मटेरियल रख सेटा होची एही मटेरियल काली मु संडे अछि काली मु बसिके पूरा एटा को पूरा भलसे एडिटिंग कर देबी पूरा पॉलिटी तो नेक्स्ट फ्यू डेज रे आई थिंक एटा को इशू न होवा दरकार समस्त अगर हे जिवो किसी प्रॉब्लम नाही यदि आपण हां कहबे आगु बढ़िया यस सर यस सर नहीं यदि बुझी पारना मते कोन आपन कहि देबी केमि पढिबे मैं आपन आउ जिंस भी देखो देखो तो आमको सब जिन को भलसे स्ट्रक्चर है पढ़ा दरकार देखो मन घर पचार गला कि व्हाट आर दी अदर फंक्शन परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यू शुड डू दैट रीड दैट इन ए स्ट्रक्चर वे मु बुझुची तुम आज तक स्ट्रक्चर वे पढ़ी न तुम रैंडम खाली पढ़ुचो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेट रीडिंग सेमिति पढ़िले तुम 10 वर्ष भी पढ़िबो किसी काम को हबनी देखो मानुची तुम ओएस रो हे जाउची काइना ओएस रो इवैल्यूएशन कहूनी आ के भी तुमको कहूना से जिसटा बट हमको पढ़िला बेले द फंक्शंस ऑफ जब हम पढ़िबा माइंड रे पांचटा एमती पॉइंट बाहरी पड़िया दरकार there should be 5 points that extracted first one is ratification of India's membership to the Commonwealth हमें Commonwealth member को ही हमारा constituent assembly जो थे सेमाने ही ratify करिथिले second point adoption of national flag national anthem national song and elect राजेंद्र प्रसाद as president देखो पांचटा पॉइंट माइंड अपने आप बाहरी दरकार की Constituent Assembly, no doubt, they perform two main functions. One is making the Constitution of India. Second was act as a parliament of at that time. And apart from that main function, देखो हमर जो Constituent Assembly थिला से regularly function as a करूथिले Constituent Assembly to make our Constitution. साथिरे से act करथिले हमर parliament भलिया ताकि law किछि दरकार हेले मेकिंग करथिले. साथिरे ताकर भी पांचटा रोल आउथिला कोन adoption membership of Commonwealth, national flag, national anthem हेले कि नेशनल सॉन्ग देन इलेक्ट एज राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ये पांचटा पॉइंट माइंड रे हमेशा मैपिंग होवा दरकार है कि देखो क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सो द मोमेंट यू आर गेटिंग दिस क्रिटिसिज्म यू शुड एटलीस्ट गेट 5-6 पॉइंट धड़ माइंड रे अपने आप आना चाहिए एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ माइंड में अपने आप आना चाहिए इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू डू लॉट ऑफ रिवीजन देखो देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क मु तुमको डायरेक्शन देखे देबी कि सही पटे जाओ बट तुमको ही दौड़ीबा को पड़िबा बहुत जोरे दौड़ीबा को पड़िबा देखो दी टाइम्स हम कह दो देखो या तो तुम भलसे पढ़ो भल रैंक नहीं जो लाइफ सेटल हो जिवो नॉन सेमती से प्रोसेस रे पढ़ी के रुहो 4-5 वर्ष 5 ईयर प्लान हो जिवो देखो मु डिमेरिट मु तुम डिमोटिवेशन करूनी तो मते भाभी पारो कि माने भारी नेगेटिव हम सत्य कथा तुमको पूछी काइना मुटा जानि छी प्रोसेस को इट्स वेरी एक्सप्लॉइटेटिव वेरी टीडियस वेरी यू नो इट्स वेरी डिमांडिंग आप फ्रस्ट्रेटेड हो जिवो तुम जो जिंस रे सो बेटर once put every effort dedication सब कुछ एक साथ में करो कि this is my last attempt whatever going to be happen this attempt I am going to do it everything I am not give more attempt यही mindset रे आपण माने आसंतु पढंतु everything is going to be very good ठीक अछि चलो तो आगो को बढ़िया जेमिति के देखो ड्रॉन अगर हम गोटे क्वेश्चन आसिला सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मेयर ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन so how far question our एमिति how far do you think Indian constitution is a borrowed constitution how far माने के पर्यंत को पर्यंत तुमको लागुची कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जोटे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन तमे कहबो यस टू एन एक्सटेंट सम ऑफ द प्रोविजन वी हैव बोरोड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड देन यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स ना and some of the provision very unique to India. So we have taken some provision and modified to it according to our suitability. For example, we have taken the supremacy of sovereignty of parliament from the UK, but we have modified it to give limited sovereignty. And we have taken from the judicial supremacy from the USA, but not that extent. So our judiciary is not driven by due process of law, rather procedure established by. एमती तुमको लिखिବାକୁ पड़िबो ओके जेमिति कि फॉर एग्जांपल in USA so their fundamental rights are absolute in USA fundamental rights are absolute but in our India fundamental rights are reasonable subject to reasonable restriction so we can say that no doubt we have borrowed but we have modified it according to our own need okay you can say that and some of the provision we have invented or you can say we have innovated in our India so there you have to write okay so जदि तुम पाखे नॉलेज थी देन ओनली यू कैन राइट फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया रो कौन नेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो कौन नेले फंडामेंटल राइट टू कौन नेले देखो प्रीलिम्स टाइम रे हमको सब पढ़िया दरकार बट मेंस टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीड एवरीथिंग रेदर यू शुड रीड इन ए वे सो दैट यू सपोर्ट व्हाटएवर यू आर सेइंग एबे बुझी पारुचंती कि ना बुझी पारना मते कहतो रश्मिता जॉइन करछन कि नहीं आज्ञा सर अच्छी ओके ओके
ओके ओके सो मते आपण कहले एबे बुझी पारुछन समस्ते किछि डाउट नै आपण मानकर कोन हमकु करबा दरकार कंटेंट माने कोन कंटेंट हमें केमिति बिल्ड करबा एटा किछि प्रॉब्लम अछि का प्रकार मते कोन जेमिति देखो आर्टिकल 368 ए देखो हमें जब पढ़िबा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जतेबेले तमे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़िबे माइंड रे मैपिंग होवा दरकार कोन लिखा होवा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमर तीन प्रकार देखो माइंड रे आपे आपे एटा खुली जिवा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थ्री टाइप्स ऑफ सो फर्स्ट वन इज विथ सिंपल मेजॉरिटी 50% present and voting it is outside 368 article ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶିଖେଇବି ବାସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା କେମିତି କଣ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସେଟ ଇଜ ସ୍ପେଶିଆଲ मेजॉरिटी ନା स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ना देन थर्ड टाइप मेजॉरिटी कोन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट ना इटा कोन हमर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% स्टेट देखो कितने क्लियरली देखो तुम पळे आसला देखो ए दीटा हम रहइबो आर्टिकल 368 रे ये दीटा जो आसीबो हमर आर्टिकल 368 रे तो बस मु कहया कथा कि जते बेले आपण पढुचंती यू शुड नॉट डू द डेड रीडिंग माने कोन बस रैंडम हमें पढुचंती सेमिति हेले प्रॉब्लम बहुत होबा रेदर व्हाट वी नीड टू डू वी हैव टू map in our mind structure way ki what kind of structure we have to categorize and how we are going to use everything है कि सेमी देखो federations some of the provisions of our federal provision of our Indian constitution if there is a question Indian constitution is a synthesis of both unitary as well as federal so here you can talk about the provisions that can clear shows India is a federation first one is two government union government state government division of power, written constitution, bicameralization. So what is the role of Rajya Sabha? Lok Sabha is people's representative na? So this is the people representative. But Rajya Sabha as name suggests Rajya, मतलब state उनका representative ना. So here the state representative. So this basic objective is to protect the interest of the state ना. Rajya Sabha is basically for federal balance. Okay. तो एक को आपण को याद रखिया पड़िबो तो रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन हेले कोन हो इजीली आपण चेंज करि पारिबे तो फेडरल प्रोविजन बचि पारिबो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन सबटु बड़ पावरफुल जो भी लॉ बनेबो इट शुड बी इन सिंक विथ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमर सेमी देखियो यूनिटरी रे कोन अछि स्ट्रांग सेंटर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड जुडिशरी गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया सर्विस इमरजेंसी प्रोविजन आई थिंक देखि परछ नै तमे एको यदि पढिले ए देखो केतना सारा पॉइंट आपन मिल गेला तारि ऊपर गोटे गोटे लाइन तक भलसे एक्सप्लेन करि देबे तमरो आंसर बनि गला केते बड़ केते पॉइंट आपण देखंते एठी गोटे पॉइंट 2 3 4 5 बहुत जगह पॉइंट आपण मिल जिवो ठीक है तो ता पर देखो एग्जैक्ट नेचर ऑफ द क्वेश्चन ये तो आपण कंक्लूजन बनि जिवो ना कि इफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर इंडियन फेडरेशन सो तम फास्ट कहबो सम ऑफ द प्रोविजन इज फेडरल सम ऑफ द प्रोविजन इज यूनिटरी एट द एंड यू कैन कॉल दिस एज ए क्वाजी फेडरल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिकॉज़ इंडिया is not a full fledged federation rather we have given more power to our center to ensure unity integrity and security of India बुझी पाले कि बुझी पाले नहीं मेरे को अरे बुझी पाले ही नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आई थिंक देखो ये जो जिनस लिखा है मते लागुनी कि मते आपन पढ़िया दरकार आपन कहबे मु पढ़े दे मोर किछ प्रॉब्लम नै आपन कोन चाहू चंदी मते कि आपन माने जहा जहा रिक्वायरमेंट कहले से जरा हम कथा हवा कोन आपन माने मोटू कोन चाहू चंदी कंटेंट तो मु आपन एटा कहि देली कंटेंट रे आपन मते मोटू कोन कोन सपोर्ट चाहू मते कहि दे प्लीज वेरी फ्रैंक देखो फ्रैंक हो कुह तमे कहबो मु पढ़े दे मोर किछ प्रॉब्लम नै तमे कहबो मु पूरा पूरा सब्जेक्ट भी पढ़े देबी हार्डली हमकू हां को सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सर टिके ऐड कर देले भलो हो सर नहीं बिल्कुल बिल्कुल सेटा अपने मैं आपन कहबी सेटा ऊपर मैं कहबी सेटा मैं एक्चुअली तुम कंटेंट सिखौची तापर मु तले जिबिनी कि तुमको एबे कहबी तुम गोटे प्रॉब्लम मिस कलो नै सेकंड पार्ट जो हम कहले कॉन्टेक्स्ट सेइतरे मु सेइ सब तुमको कहबी बॉडी कंक्लूजन इंट्रोडक्शन केमिति करियो फर्स्ट तुम कंटेंट सिखौची कि माने गोटे मसाला माने कोन कहलो तुमको मु लिखेइली कि राइट द इवोल्यूशन ऑफ
पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आई थिंक टिके भूल भाल करके आपण सीक्वेंस फॉलो कले नाही तो बुझुची बहुत फास्ट टाइम आपण माने लेखुचंती बट मु एज ए कोन कहती हमरो माने गुड गुड विशर मु तो चाहिबी नहीं ना कि भाई तुमको रिलैक्स कर दिए ना मु चाहिबी कि जते हार्ड सही पारे मो द्वारा सेते हार्ड ट्रीटमेंट में बेसी करू ताकि एग्जाम में चाहे कुछ भी क्वेश्चन आसु तुमको फर्क ही पड़िबनी बुझी पाले कि नहीं सेटा कथा आबी सेटा हम कथा आबा मते फास्ट कोन कंटेंट आपण पढ़ी परिबे कि मु सपोर्ट करी पढ़ाई देबी या किसी प्रॉब्लम आपण जहा कहियो मोर किसी प्रॉब्लम नहीं कंटेंट सारे किसी माने हमें पढ़ी पारिबो किसी ये नहीं कि दरकार पड़िबो जदी क्या को कहबे जदी कि सेटा तो जाननी हाँ किंतु जदि प्राय लेखा या तो पर आमे अछि। या पर एमएदी कर दवा देखो प्रकाश देखो आमे एमती कर दवा मु फास्ट आपन ए ओरिएंटेशन टा करि दउची माने कोन कोन आपन दरकार तापर आपन टिके पढंतु पढिला परे आपन जे लागुची कि नाही सा टिके सपोर्ट करि दियंतु सैटरडे संडे एनीवे वी आर गोइंग टू गिव 6-7 आवर माने तुमको हफ्ते रे हमें 6-7 आवर दबु तमे यदि कहबो आमे सैटरडे संडे करि परिबा आ या फिर वेडनेसडे गोटे करि परिबा वेडनेसडे संडे भी हम करि परिबा तमे चाहिबो आमे डीटा दिन को भी दिन दे परिबा मु भाबु सैटरडे संडे भलो हो काई सब सर्विस रे असंती जॉब रे असंती बेटर हो इतना संडे आमे पूरा गोटे बसिबा माने कोन कहलो दुईटा तीनटा रु बसिबा दुईटा रु बसिबा पूरा 6टा जाए समस्त बसिबा पड़ो मु भी बसिबी तमे भी बसिबो ଆଜ୍ଞା ठीक अछि ना ସଣ୍ଡେ ସଟରଡେ हाँ हाँ संडे सैटरडे बसिबा मते टिके ब्रेक मझरे दे दो काई ना 2 घंटा बसले मोर बैक पेन होवा स्टार्ट हे जिवो ना आपण मान तो उठी पळै परिबे मोर तो कैमरा लागि छै उठी परिबे ना हला कि तो 2 घंटा पर टिके ब्रेक नवा पुणी आसी जिवे आपण कोन दरकार मते कहिले मु से अनुसार प्रिपेयर हे जिवि देखो तमे यदि मते कहिबो आज हम ओरिएंटेशन करि दउछु मु आपन सिखै देली तीनटा जिंस किछि इंट्रोडक्शन सिखै देबी कंक्लूजन सिखै देबी क्वेश्चन देखला पर कोन करिवे मु सेटा भी सिखै देबी बट तापरे आपण टिके दिन पढंतु पढिला परे जा आपण फील होछि यदि कहले कि ना हम सर पॉलिटी प्रॉब्लम होछि आमे मने रखि पानु आपण पढि देला परे बहुत जल्दी आमे मन रख दउछु मु पूरा माने गोटे सप्ताह रे पूरा 30-40 पेज हम उडे दवा आ तम माने पढ़ी के आसीबो आ मते कहबनी कि पूरा डिटेल समझाओ काई ना देखो तुम मेंस दोछो तुम माने मु एक्सपेक्ट करछु कि तुम पाखे नॉलेज अछि हला कि हम सेमति कहबो ताले मु पढे दी पारे काई ना पूरा डिटेल तो पढे होबा ना कोन कहउछन्ती आपण माने एवरीवन इज एग्री ऑन द सेम पेज ना हां को ମୋ ମତରେ ଆମେ ୱିକ୍ ମାନେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଛାଡିକି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ପଢିକି ଆସିବା ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବା सेटा तो हम या डेली ଯଦି लाइव रे target सेटी ଥିବ, सेटा देखो सेटा तो सेटी होउची तो सेटा तो सेटी हमर लाइव आंसर राइटिंग हो जाय आपण माने सब लिखिबे देखो मु समस्त को इवैल्यूएट न करू बट सेठी प्लीज केही जणे भी मिस करिवेनी बुझो ट्राई करंतु से जो लेखा होची सेटा यूपीएससी लेवल आ ओपीएससी इवॉल्व होची तमे एक्सपेक्ट करिवो यूपीएससी लेवल रो क्वेश्चन सेठी भी तमे दे 100 दिन सेठी 100टा क्वेश्चन लिखिदेले ना बिलीव करो से 100टा क्वेश्चन तते हमको एते इंप्रूवमेंट हे जो ना आंसर राइटिंग क्योंकि टाइम लिमिट रहउची समस्त सबमिट करिवे केही भी लेजी होबानी कॉपी इवैल्यूएशन हो न हो किस प्रॉब्लम है बट डेली सेठी आपण लिखिबे आसी आधा घंटे लेखि पळी जातु 15 मिनिट लेखि जातु लेकिन समस्त आसी लिखिबा पड़ो कंपलसरी ठीक अछि चलନ୍ତୁ तो मु एटा को छाडी दउची आपण कंटेंट को पढिबा को पड़ियो मो कहया कथा जेतला आपण पढुचंती माइंड रे सळे देसा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जेतेबेले तो माइंड रे आसला गोटे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी तो माइंड रे गोटे मैपिंग करंतु मैपिंग माने एमिति गोटे ट्रायंगल बनेइबे ट्रायंगल रे बेस रे कोन रहइबो टॉप रे कोन रहइबो ना टॉप रे हम रहइबो सुप्रीम कोर्ट ता तळे रहइबो लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स ना ता तळे हम कोन रहइबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ना एमती माइंड रे आपन मैपिंग करिया को पड़िबो हर एक चीज को माइंड रे मैपिंग एमती बसी की खाली हम यदि पढिबा रैंडमली बहुत प्रॉब्लम ओके सो दैट इज व्हाट माय सजेशन प्लीज डू लॉट ऑफ जब भी तुम पढुचो माइंड रे सजाड़ ताको लिंकेज करो थिंक करो एंड एपट रे पढुचो एपट रे पेन रे एमती स्केच करो ड्रॉ करो पॉइंट को मैपिंग करो हैला कि जेमि देखो 6 फंडामेंटल राइट्स तमे 6 फंडामेंटल हम कोन राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट पढी की छाडी दोछन ना 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 6टा फंडामेंटल राइट पढिलो पढ़िला पर एको साइड कर दो टैबलेट को एटी कॉपी रे लिखिबो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट एटी हेक्सागोन बनेबो हेक्सागोन बुझ पड़तो 6टा पॉइंट जो रहइबो देन से 6टा पॉइंट को आपण रिमेंबर करिए कोन कोन 6टा थिला जदि मने पड़नी आ तो दुबारा पढ़ी की ताको रिकॉल करिवे मो कहया कथा एटा जति कि आपण पढ़िले जो दिन रे ताको माइंड रे स्ट्रक्चर करो स्ट्रक्चर करो स्ट्रक्चर करो स्ट्रक्चर करो 6-7 थरो पूरा रिवीजन करी की स्ट्रक्चर करो ता परे जाके ओपीएससी एग्जाम ओ फॉरगेट अबाउट ओपीएससी यूपीएससी रे भी बसी की देखो तुमको क्वेश्चन देखि कि तुमको कहले जूम है कि जूम उठियो कि तार मॉडल आंसर तुम सामने रे उठियो मु गारंटी देई कहूची मोर गोटे स्टूडेंट थिला ता काली आसीथिले सी तांको मु माने सी दिल्ली रे थिले सी सेट थिले तो तांको मते से आसी सबले पढ़ा पढ़ी से जमा करेनी आसी कि मते कहला कि माने मोर छोटो भाई बळी स्मृति भाई
क्या करने से मतलब ऐसे हमेशा आगे मोटिवेशन उसको चाहिए। मैंने समझते पचारे कि भाई कौन कले मोर क्लियर हो मुझे सब इंटरव्यू दूसरी यूपीएससी रे मुझे गोटे कथा कहली भाई देख आम एत पढ़ी पढ़ी कि यूपीएससी देख भाई हालत खराब कर दउची न पढ़िले चांस ही ना एटा फास्ट रे क्लियर रख आमे पढ़ी पढ़ी कि लाइफ रे किछि हेई पाउनी देख केते हालत खराब होउची न पढ़िले भाव नाही कि तोर क्लियर हबो हैला कि एबे मु सेटा को मॉडिफाई करी कहूची खाली पढ़िले भी भावना हबो पढ़िवा सहित तमे मैपिंग करू ना भूली जाओ ठीक अछि आ तमे मैपिंग करी पढुचो किछि एक्स्ट्रा एफर्ट लागिबनी मान दैट मींस यू योरसेल्फ प्रेजेंट हियर while you are studying there should not be any cricket is going on there should not be any FIFA World Cup no one should be there you should immerse जैसे बोलते हैं ना दारू की नशे में डूबे हुए है इंसान सेम तमे कौन हम पॉलिटिक्स नशारे एते डूबी जावा दरकार कि तुमको दुनिया न देखावा दरकार कौन चलीची तमे यदि 6 पॉइंट पढ़िलो 6.8 तुमरो माइंड रे मैपिंग हबो तापर तुमको आगु को बढ़िबो हैला कि otherwise if you are not remembering what you are going to write content के बिना किछि हेई परिबोनी आंसर है सेति पई content enrichment is must and for content enrichment I am going to provide you one by one note काली संडे अछि मु पॉलिटी को पूरा एकदम रिव्यू करी कि 120 पेज आपन को दे देबी डन मोर सरपुरु आपन को गोटे सप्ताह रे मु टाइम देली ये पॉलिटी को पूरा का पूरा गोटे रीडिंग हवा दरकार 120 पेज 6 डेज तो 20 पेज पर डे चाहे मर जाए पैर कट जाए हाथ कट जाए लेकिन पढ़ाई होना चाहिए there should not be an excuse ठीक है जी समस्त हे जिवो एटा जो माने मेंस दोचंदी ओपीएससी मेंस दोचंदी से माने भाई हे जिवो there should not be any excuse खाइबा छाडी दियो सोइबा छाडी दियो लेकिन पढ़ा न होवा दरकार कम भाबो गोटे वर्ष पर तुम लाइफ कोडी चेंज हो जे तो मेहनत करछो आ नले पणी सेमति हमें रेस्ट हर वर्ष सेमति प्रोसेस रे पढ़ी रहइबा हे जिवो समस्त कर सर ए बस मते कमेंट ओपीएससी जो आप यस हमरो ଅଛି ओपीएससी रे मिलिबो नहीं सेटा ओपीएससी पाइडा ओपीएससी पाइ ठीक अछि इट्स ओपीएससी मेंस एडा डाटा रो कोड पाइबी मु ना एटा ओपीएससी स्टूडेंट पाइ कहूची तमे तमे चलियो तमे पढे पण चलिबो देखो जो माने ओपीएससी मेंस दोचंती आपण माने एग्री करूचंती करि पारिबे यस सर नहीं ये कमिटमेंट मत दरकार आई नीड दिस कमिटमेंट विदाउट योर कमिटमेंट आई नॉट फॉरवर्ड माने जो माने ओपीएससी मेंस दोचंती वो तांको टू ए कमिटमेंट ओथ मत दरकार कि हमें नेक्स्ट सप्ताह रे चाहे हमर गोड़ कटि जाऊ मुंड कटि जाऊ कुछ भी हे जाऊ लेकिन ये हमें सारीबु पॉलिटी और आसीबु एठी Yes, मु sir. मु सुनेबी सेमती मोर दया माय नहीं आई एम वेरी क्रूएल पर्सन Yes, sir. आई नीड दैट मच हां बट दिस इज व्हाट Yes. आई नीड योर कमिटमेंट ओके ठीक अछि तो तमे माने पढ़ी की आसो तापरे जदि आपन को लागुची कि पढ़िला परे प्रॉब्लम होची मते आपण मे बी वेडनेसडे टाइम रे तो वेडनेसडे भी दरकार है तमे गोटे दिन पूर्व कहबे कि नहीं सर थोड़ा सा रिवीजन मते आपण कर दे मु नेक्स्ट सेशन ने पूरा जो दुटा दिन रहबो नि सैटरडे संडे में पूरा पॉलिटी को रिवीजन कर दे मेंस पर्सपेक्टिव रे सेठी हमर प्रीलिम्स ऊपर क्वेश्चन आसीबनी ओनली मेंस पर्सपेक्टिव कोन करिया दरकार केमिति रखिया दरकार ओके क्लियर कोई डाउट नहीं हो सर हाँ चलो आम एबे जीवा सेकंड पार्ट हमर कोन थिला जोटा हमर एड करूथिले सेकंड पार्ट रे हमर आसला कॉन्टेक्स्ट रे तमे कोन करूछो मु आपन क्वेश्चन देखुची कॉन्टेक्स्ट माने बुझियो ट्राई करो कॉन्टेक्स्ट माने मु तुम पचारली भाई आज तुम कोन खाई के आसीछो मु ज्योति रंजन को पचारली ज्योति तुम कोन खाई के आसीछो ज्योति मते कोन आंसर दोची कि आज बहुत गरम थिला सेति पई मु आज खरा बेले सोई पड़थिली सोई की उठी की मैं एबे पढुची तो मते तुम आंसर ठीक देला तो मु कौन भाभी मते भाबो मते जणे एमती आंसर देला मु कौन भाभी भाई मु पचारुची कौन ये कौन आंसर दोची तो ब्लफिंग करूची ता मानना तो सेति पई सबले क्वेश्चंस टाको पढो डिमांड कौन अछि क्वेश्चन रे डिमांड जदी अछि क्वेश्चन रे जहा तुमको यदि पचारली तुम कौन खाइछो देन यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टेकन योर लंच डिनर और यू नो ब्रेकफास्ट सेही एग्जैक्ट वर्ड हमको दरकार तमे कौन करूछो तमरो घर कोठी दिस इज नॉट माय कंसर्न whatever I am asking you should write like that मैं गोटे क्वेश्चन आपन को नै कि मु देखौची काई ना आपन माने से कमिटमेंट बहुत करूछन देखो एडी क्वेश्चन न मन करो is the Indian constitution is a simple revised version of government of India act 1935 एडी इज माने कोन क्वेश्चन मार्क पचाउची ना कि जो हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अछि कोन एटा ओडे रिवाइज्ड वर्जन ऑफ दी जो हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कोन रिवाइज करी के ऐड करछंती या फिर और किछि हमें करूछंती बुझी पाले कि अभी क्वेश्चन टा भलसे बुझी पाले ना बुझी पाले मते कोन या माने होची देखो फर्स्ट टू क्वेश्चन तो पचाची इज ता माने होची कि जो हमरो कॉन्स्टिट्यूशन बनिला सेटा कोन हमें सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिवाइज करी के बनै देले या फिर किछि ऐड और जगह रे हमें करले आंसर कोन हबो some of the point we have taken from the government of India some of them we have innovated some of them we have brought from somewhere else ना
आई थिंक एबे आपण बुझी पाले ना कॉन्टेक्स्टा माने कोन कॉन्टेक्स्टा माने जोटा डिमांड अछि सेटा लिखवा दरकार हमें कोन करूचंती जोटा मते जणा अछि मु ताकू सेटा दे दोछि सेतिरे मार्क मिलिबनी बुझी पाला ना यूपीएससी कॉपी रे मु आपन कहूची एबे धीरे धीरे ओपीएससी भी इवॉल्व होची पिलां को बिलीव करे 60 मार्क मिलुची 250 रु ओपीएससी तो मार्क दे दोछि लिबराली बट पिला अछंती 30 40 मार्क रखुचंती तमे यदि किछि लेखिबो सेति पय हमु कोन करिया पड़ो सब बेले जत्ते बेले तुमको क्वेश्चन मिलिला फर्स्ट रे तुमको आइडेंटिफाई करिवो व्हाट इज द कीवर्ड्स आई थिंक मु देखिछि बहुत जाको पिला तुम कोन करूचंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रैंडम आपण माने लेखुचंती किछि भी आपण माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रैंडम किछि भी लेखुचंती जेमिति आपण लेखुचंती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए लैंडमार्क एक्ट दैट हैज बीन एनैक्टेड बाय द ब्रिटिश टू ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ रिफॉर्म भाई इससे अच्छा मत लिखो ना छोड़ दो ना इसमें है क्या मुझे बताओ यू आर राइटिंग 3-4 लाइंस विथ जीरो मीनिंग यू आर नॉट कन्वेइंग एनीथिंग सिंपली यू आर वेस्टिंग योर टाइम ना इससे अच्छा you can write 2 lines 3 lines but that should be heavy worded words. For example, you can say government of India act started after demand of Indian to provide more powers or inclusion of Indians in the political power led to the government of India act or Simon commission. Then Simon commission ultimately submitted and second 3 round table conference and then white paper is submitted. That is what led to the coming of government of India act 1935. कितना बढ़िया लगला देखो. You can say that because of demand of Indians, there is a Simon Commission is established, and Simon Commission recommendation led to the 3 round table conference, and hence ultimately British implemented Government of India Act 1935. ठीक है तुम जति की मन रखियो तुम कहले 3 लाइन हैला लेकिन केते सारा तुम वैल्यू देला देखो की भी सेटा पढिबो ताकू लागियो कोन हां यू आर एडिंग सम वैल्यू टू योर आंसर बट तमे केमते लिखुछो सो दिस एक्ट वाज एनैक्टेड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म किछि तार वैल्यू अछि मते कहलो. So always try to write something that really show your knowledge. क्योंकि देखो तुम जो एंट्री करते नहीं कहते ना कि रॉयल एंट्री माने एंट्री कला एकदम इंप्रेशन हेगला तुमर आंसर रे इंट्रोडक्शन रे तुमको इंप्रेस करिया पड़िबो सेति भाई प्लीज जब भी को टॉपिक्स को पढुचो तार सेहिटी ही तुमको रिमेंबर करिया पड़ो यार इंट्रोडक्शन केमिति हो मु कंटेंट रे जाके आपन को देखौची मु आपन कंटेंट रे जाके को जगह रे गोटे सिंस ऊपर स्टार्ट करू देखो देखो drawn from various sources if question is that whether Indian constitution is a borrowed constitution or not. So question is like that, do you believe that Indian constitution is a borrowed constitution? So here it is given that B.R. Ambedkar said that constitution of India has been framed after ransacking of all known constitution of the world. So you can use this as your introduction as said by Dr. Ambedkar that Indian constitution has framed by ransacking or ransacking means going in depth about all this constitution, then we have prepared our constitution. So this can be your introduction. So while studying the content, you have to identify, you have to ask this question कि क्या question इससे आ सकता है, what kind of question it can ask. On that basis, you have to develop your introduction. ठीक ଅଛି ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କେମିତି କରିବେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ introduction conclusion ହେଇଯିବ तो ଆପଣ ये क्वेश्चन ର डिमांड बुझी पाले कि नहीं मते कहले ये क्वेश्चन आई थिंक या पूर्वରୁ बहुत पिला बुझी पार नथले ठीक से मैं आपण माने कॉपी देखि छी पूरा लाइन बाय लाइन में पढी छी सो आई कैन अंडरस्टैंड बेटर क्या प्रॉब्लम तुम फेस करछो. सर ए क्वेश्चन रो इंट्रोडक्शन जो अछि माने जो 1935 एक्ट को छाड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन रो इंट्रोडक्शन रो आगे कर परबे कि ऑप्शन नहीं 80 कीवर्ड्स कोन एटा मते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द कीवर्ड्स ना हां किंतु जाने पे जो नहीं ना देखो इट इज कीवर्ड्स कोन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड इटा होची यार कीवर्ड्स ओके ना तो इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तुमको एम्फसाइज करियार अछि देखो तुम बुझिया पड़ो एटी हीरो किए मूवी रो हीरो किए एटा को आपन बुझिया पड़िबो हैला कि एथरे को डाउट अछि क्वेश्चन रे केमिति कोन फ्रेमवर्क करिवे फर्स्ट पार्ट रे तुम लिखिया पड़िबो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हाट आर द प्रोविजन वी हैव टेकन मैंने पूरा का पूरा सब बने दी देखो दीज आर प्रोविजन एंड मेनी अदर की प्रोविजन वी हैव टेकन however many key feature outside the government of India act you can see all these things na apart from that you can add lot of points mu तुमको आपन को क्वेश्चन ने कहि छी यदि if it is 10 marker add minimum 10 points if it is 15 marker develop that skill to add 15 points if not 15 point 12 to 15 points okay I think एथरे को डाउट नहीं आपन को आगे बढ़िया हम एटी वैल्यू एडेड भी दे दी छी आपन मानु टिके पढिबे देखो सर 20 मार्क्स आगो पाई बढ़िया तो 4 पेज हो हां 4 पेज लिखिया पड़िबो ओपीएससी रे
प्लीज आपण माने कहंतु किछ इंटरेक्शन करंतु जो माने पर्टिकुलरली ओपीएससी रो मेंस लेखुचंती प्लीज इंटरेक्शन करंतु कोन आपण कहया चाहछन माने बुझी पाले बुझी पालेनी यस सर प्लीज मेक दिस इंटरेक्टिव सेशन एते भी डरिया दरकार नै मैं आपन कहूची रियल जिस देखो नेक्स्ट होची कोन कहलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इवॉल्व विथ टाइम टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी या माने मते कोन कहलो हाथ ऊपर करी को देखो सेशन को आप इंटरेक्टिव बना दो ताकि देखो भूल हले कोनटा आइ जिवो भूल हले कोनटा आइ जिवो एटी भूल हबो आ एटी भूल करवानी जेंदा कि ओपीएससी भूल कले चलिबो एटा अमेंडमेंट हबो बोली कि कहूची फ्लेक्सिबिलिटी एमे अछि से तार जो कहूची कि देखो से कहूची कि हाँ प्रकाश ये कोन कहू जानछ नहीं देखो हमको हम कॉन्स्टिट्यूशन को एमती डिजाइन है कि सिचुएशन हिसाब से एडॉप्शन करि पारुछि यदि हम एमती गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनै देबा कि जोतरा अमेंडमेंट ही हेई परिबा नाही जेमिति कि एबे देखो या पूर्व हमरो टैक्स थिला कोन मल्टीपल टैक्स थिला जीएसटी हवा हमको अमेंड होला तापर तो जीएसटी ही पाला ना इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड देन वी हैव नेवर इंप्लीमेंटेड जीएसटी ना बुझी पाले ना जेमिति हमरो मन करो रिजर्वेशन सिस्टम को हमें इंप्रूव ही करि पारिबानी सो वी नेवर हैव इंप्लीमेंटेड द reservations to the economical weaker section na so that is what the provision you have to talk about the flexibility yet rigidity provision of our Indian constitutions so your introduction should be how our Indian constitution is both flexible as well as rigid so it evolved with the need and changing of the time you can give an example so in last kete varsh rani amar constitution adoption heichi you can say last 70 75 76 odd days odd years so we have amended our constitution 106 times so that is a clear indication it is not that flexible we can amend as per whims and fancies it is not that rigid that it cannot amend so it can amend as per need of the time बुझी पाले ना देखो आपण एठी लिंकेज करि पाले कि नै करंट सहित ना देखो ना हाँ मु एही जिंस को आपन कहया चाहूची तो पढिला बेले आपण कॉन्टेक्स्ट माने बुझिया को ट्राई करंतु क्वेश्चन ने कोहण पछारुची मु मानुची देखो टाइम नहुची कोई बात नै एबे आपण स्टार्टिंग रो आंसर लिखुचंती डोंट वरी अबाउट मैं कहला गोटे मास भूली जानतु कि मोर आंसर इंप्रूव हो गोटे मास ध्यान रखंतु मु सिखे बस माने मो आंसर रे बस कमेंट आसु माने एकदम कोंतु माने खराब आंसर लिखुची सेमिति कमेंट आसु सब प्रकार जिंस को ट्राई करो सिखो मिस्टेक करो तापरे धीरे 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 तापरे गोटे मास पर देखो केमती इंप्रूव हो चला कि फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट तुम बुझा को ट्राई करो यही क्वेश्चन ने मते को 7 शेड्यूल डिलिनेट लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट येट द क्रिटिक्स आर्ग्यू it disproportionately empower union so examine the significance suggest way to strengthen cooperative federalism so here you have to talk about here the keywords is what so if you have to do the introduction केमिति लिखियो मते कहलो forget about the model answer आपण मते कोन तो केमिति लिखियो एटा को कौन प्लीज सर पावर सेशन डिवाइड गुडी ହେଇଛି यूनियन और स्टेट भितरे ने मु एंड कहूची इंट्रोडक्शन में कौन लिखियो देखो हमेशा गोटे जिंस मन रखता पॉलिटी रे आमे त इंट्रोडक्शन लिखंती पॉलिटी रे हम मु 88 लिख दोची लाइक हम जोटा स्ट्रेटजी बनैथिले हम सेट लिख दे देखो कॉन्टेक्स्ट रे हमर जो जिंस आसुची मेटा को कहि दो देखो कॉन्टेक्स्ट को राइट एज पर द व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम कौन लिखा पड़ो इंट्रोडक्शन लिखा पड़ो ना इंट्रो जब आमे लिखिबा ऑलवेज रिमेंबर इट शुड नॉट बी मोर देन 10% वेटेज ना 10% weightage माने it should not be more than 3 to 4 lines that हुए तुम अधिका लिखुचो then you will not get the time to write your body तो आमे इंट्रोडक्शन केमिति लिखंती पॉलिटी रे स्टार्टिंग फ्रॉम रिमेंबर दिस थिंग्स आर्टिकल और आमे कोन लिखिबा सीए माने होची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके और आमे कोन लिखि परिबा शेड्यूल ना और आमे कोन लिखि परिबा पार्ट्स लिखि परिबा ना ओके एटा गोटे हला एटा हमरो गोटे कोन कहला ऑथेंटिक और लीगल प्रोविजन तमे लिखि परिबा ना लीगल मींस लॉ रे कोन अछि
For example, judges, how judges can be removed. You can start that judges removal of the judges of Supreme Court or High Court. They are driven by Judges Inquiry Act of 1989. So law of procedure, मतलब legal provisions से हमें start करी पड़ेगा. Representation of People Act provide the qualification, disqualification of elected, those who are contesting for the election. Okay. So starting हमें कौन करी पड़ेगा? Article, constitutional amendment, schedule, parts, legal provision. Okay. Then आम गोटे कौन करी परिया आ गोटे प्रकार डेफिनेशन आम करी परिबा दैट कैन बी करंट अफेयर्स है ना करंट अफेयर्स साथ रे भी हमें इंट्रोडक्शन करी परिबा सो दिस इज सेकंड वे ऑफ योर इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल इफ समथिंग रिलेटेड टू गवर्नर समथिंग रिलेटेड टू इलेक्शन दैट इज इन न्यू सो यू कैन स्टार्ट रिसेंट actions of the governor in Kerala created political controversy regarding role of governor in a federal system. Okay, like that you can start now. Recently, government implemented SIR, Special Intensive Revision Drive, all over the few states. So that is what led to the criticism of role of the Election Commission of India, starting from the current and linking with the demand of the question. For example, recently the 106 Constitutional Amendment Act passed by the Government of India. How far do you think that it is going to empower our women? So you can start from the current affair. Recently, our Parliament passed the Hindi na actually या फिर Women Reservation Bill under 106 Constitutional Amendment Act that basically want to provide 1/3 reservations to our female. That much is more than enough. So recently you have added the current affair na. So anything, if something happen, you can write from the current affair that is going on. देखी पारिबो पॉलिटिकल करंट लिंक करी कि ना. Yes, sir. Next you can do something definition based. बहुत इजी मतलब कहला बहुत इजी पॉलिटी बहुत इजी डेफिनेशन बेस माने कोन मन अगर एंटी डिफेक्शन तमे एटी कोन करि पारिबो किछि आर्टिकल डाल दो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाल दो ना हले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली दो माने जेंति एंटी डिफेक्शन में को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 50 सेकंड रश्मिता म्यूट योर माइक रश्मिता प्लीज म्यूट योर माइक सर एंड प्लीज वाइल स्टडीइंग प्लीज एक अलग जगह रे बसी के देखो एट देखो सीरियसली न देखले हबनी ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो मते बनिया पाई तुम देखो पूरा सेटअप देखो पूरा ड्रेस रे में आज के टी शर्ट रे बसी पढ़ी पारथांती whenever I am putting my effort please आपण माने टी सीरियस पढंतु देखो हम कहू छी देखो बहुत तुमको माने बढ़िया रैंक आसी जो just believe me if you all prepare very well it is my guarantee you will get good rank बस मते गोटे जो माने कोन नहीं 100 दिन मते दे दियो म जहां कोई ताकू करो जिंदगी रे सब किछि भूली जाओ बस जहां मु को फॉलो करो बट यही डेडिकेशन तो तुम करबनी फिर नेक्स्ट ईयर भी एठी बसिबा एही सब चलिबो आई डोंट वांट नेक्स्ट ईयर आपण माने कंटिन्यू करंतु मु चाहूची एही थरी रैंक लेके जाओ हैला कि प्लीज चलो तो डेफिनेशन बेस आपण कोन करिवे जेमिति कि गोटे क्रिटिकल वर्ड अछि मन करो जेमिति कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैला कि जो जगह क्रिटिकल वर्ड अछि हमरो सेही जगह यू कैन डिफाइन दैट ना बुझि पाले माने क्रिटिकल वर्ड जोटा लागुच टिके बडो डेफिनेशन हम देई परिबा ना जेमिति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोन रीट jurisdiction of Supreme Court kono specially petition kono these are not self explanatory so in that case you can use definition na define the key terms na मैं आपन के एग्जांपल दउ छी जैसे एंटी डिफेक्शन आपन लागु जेटा इजी वर्ड so we need to define what is anti defection but here we can say 52nd Constitutional Amendment Act inserted what 10 schedule na and that is what provide disqualification if change party na simple लिखु छी तो एमती होय नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स अछि ओके सो दैट यू कैन डू फॉर एग्जांपल मु आपन को आउट गोटे एग्जांपल दउ छी जेमिति रीट jurisdiction of Supreme Court so what is the writ means enforcement of fundamental right na agar question is that writ jurisdiction of Supreme Court is called as soul of our Indian constitution there you can start your introduction writ jurisdiction is provided under article 32 of Indian constitution they basically talks about enforcement of fundamental right so writ jurisdiction being issued by the high court or Supreme Court for enforcement of the fundamental right जहां पर टिके वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स अछि बुझी हो नाही in that case you can define that na
pardoning power of president. There you can say pardoning power means define कर सकते हो ना, you can define what is pardoning power. So I think this 3-4 way you can start your definition also. Some of the current affair you can start from the data. If question is that criminalization of politics, politicization of crime, there you can use some quote. ठीक है, you can start from quote से भी start कर सकते हो, data से भी start कर सकते हो, committee का recommendation. हाँ, one more thing, I'll give you the committee recommendation also, don't worry. Recommendation of all committee I'll provide to all of you. Please मुझे थोड़ा सा देखो, दो जिनस दरकार मते टे कहबे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मु दे देबी, तापरे आपण कमिटी रिकमेंडेशन आपण मानु दे देबी. You have to do lot of value addition, okay? Then किए गोटे भल सुप्रीम कोर्ट रे जज अछंती या फिर को भल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अछंती, तांकर देखि छोटे भल कोर्ट आसिला, ओपिनियन आसिला, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द ओपिनियन आल्सो. जेमिति मैं आपन गोटे एग्जांपल दोछि, आई थिंक कि गोटे कहितले द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज मिलिटेड अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी ना. Practice of untouchability is militate against the human dignity. That means it violate the dignity of human being. So if anything related to Article 17 untouchability, discrimination, you can start from there. Article 17 is basically talks about prohibition of untouchability. It's a clear indication that practice of untouchability is militate against human dignity. You can start from there. ठीक है, माने मो कहया कथा कि माने जेमिति हमर एबी डाइसी रो हमर नै जेमिति गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इक्वल बिफोर द लॉ, हम तारो जिंस को यू कैन राइट फ्रॉम देयर. फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. जैसे थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर के देथिले टीएसपी, के देथिले को डाइसी नहीं, ये क्वाड दैछन्ती Montesquieu क्या कहते? Absolute power corrupt absolutely. So we have to segregate entire government into 3 branches: executive, legislature, and judiciary, so that there will be check and balance and separation. No one will be have more power, so we can control the misuse of power. You can give this kind of quote if you know. यदि आसुनी छाड़ी दे कि दरकार नहीं, कोई यदि quote तम पाकर अछि, then you can use like that. Okay, ठीक अछि. सर हाँ ना किस तो गोटे कहि दियो. यस सर, यस. यस आगे सर. सर, आगे सर. कुछ नहीं, भगवान तुम करो, कुछ नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, बता दो बाबा. लिटरली आई एम फीलिंग लाइक दैट. भगवान तुम्हारा भला करे, बच्चा बता दे. देखो पढ़ा पढ़ी रे सर नकले कमिटी सर हाँ कमिटी रिकमेंडेशन टिके दे देबे आ रिसेंट रो सब जो सब दे न्यूज़ देबे सब जहाँ अछि. दरकार. सुनो पेशेंस रखिवो, मते गोटे थर रिमाइंड कर दो. टिके पेशेंस रख, माने मते कहि देला परे मो कोन होय कि सब जिंस मन रहे. टिके पेशेंस रखो, तो जा मागिवो ताटू मो अधिकारी सब देबी. टिके पेशेंस रखिवो, हड़बड़ी हबनी. माने गोटे थर देले टिके मने पके दो. मो टिके बारी कोन कहले भूली जाए आ टिके बहुत बिजी रहे, तो सेति भाई पेशेंस रखिवो, तो भल जिंस देबी. मते रिमाइंड करिवे कि हां दे दियंतु, मो सांग आगे दे सर. देबी, मोर किछ प्रॉब्लम नै. हां, सो एटा हमरो इंट्रोडक्शन हे गेला. इंट्रोडक्शन ए जिंस को हमु करिया पड़िवो. बॉडी रे हमु कोन करिया पड़ो, बॉडी पई मु आपन कहली बोल से, बॉडी पई आपन कोन करिया कंटेंट डेवलपमेंट करिया पड़िवो. कंटेंट डेवलपमेंट केमिति करिवे, समरी मटेरियल को रीडिंग बार बार करिया पड़िवो. आपन बार बार पढ़िया पड़िवो. आ त पढ़ला बेले स्ट्रक्चर माइंड रे हवा दरकार. बार बार स्ट्रक्चर हवा दरकार. हां एटा पॉइंट, एटा तीनटा पॉइंट, चारटा पॉइंट, एटा एटा माने बुझी बात नहीं. खाई तो एपटे खाउतु, एपटे चिंता हवा दरकार. देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट में को सत कथा आपन मु कहले आपन लागिवो एमती. जेतेबेले मु दउथली आपन माने मेंस जो 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 अटेम्प्ट रे मु इंटरव्यू देइची, सेही समय रे तुम भरोसा करिवेनी, मु सकाळो उठी फास्ट मो माइंड चले सोसाइटी रे कोन कोन पॉइंट्स अछि. आई एम नॉट लाइंग. मु इवन ब्रश करूथि, माइंड चलती हो ग्लोबलाइजेशन रे 4-5टा पॉइंट, 6टा पॉइंट, 3टा पॉइंट, 2टा पॉइंट, मु माइंड रे पूरा चलीथि ओइ जिंस. एंड सेति पाई ही जब हम एग्जाम रे बसु, तुरंत हमकु तुरंत क्वेश्चन देखले ही आंसर पळे आसी. माने क्वेश्चन देखला माने मते फर्स्ट टाइम जूम हे जो कि हां 3टा पार्ट, 2टा पार्ट ए क्वेश्चन ने पछारिची. यार इंट्रोडक्शन कोन हवा दरकार, माने सेमिति लेवल रे हमकु प्रिपेयर करिया पड़िवो. खराब भाबो भल भाबो, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट. ओके, तो सेही लेवल रे पढ़िया जल्दी केले हमकु जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग होउनी कोन करा दिबो.
हब 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 एटा तमे पढ़ा पढ़ी करिनो ना सेटा हला प्रॉब्लम देखो आज पन तमे जोटे गाइड जति पढ़िचो केही तुमको एटा कहि नांती करिया पाई ना एटा प्रॉपर हला गाइडेंस प्रॉब्लम ना ଦେଇନାହାନ୍ତି। कथा पड़छि से निजे करि नांती ना जे तुमको गाइड करूछन से ହଁ निजे कोई करि नांती केमिति दूसरे कहबे निजे ही क्लियर कर नांती सेटा हला प्रॉब्लम देखो मु कहू देखो जे भी करिछन तुम पचारिबो हमको एटा बहुत हम ब्रेनस्टॉर्म करू हमें माने बहुत ब्रेनस्टॉर्म करू और रेगुलर आंसर राइटिंग मोर जति की अटेम्प्ट थिला मु डेली हमें पांचटा आंसर राइटिंग करू बिलीव करिवेनी आमे लाइब्रेरी बसी करू ना लाइब्रेरी बसिले एसी मिलिबो आमे सेठी गोटे मंदिर थिला जो गरम हुए से मंदिर साइड रे सेही टाइम बसी खेडी आंसर राइटिंग करू बसी ସେଇଠି ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଆମ ଛିଟକା ପଡୁଥିବ ତବେ ବି ଆମେ ସେଇଠି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରୁ ବସିକି ଇଭାଲୁଏସନ କରୁ ରିଡିଂ କରୁ 4-5 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଥିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ପଢୁ ସେଠି ବସିକି ମାନେ ମାନେ ଚାहे कुछ भी ହେଇଯାଉ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଆମେ ଭେଦିକି ବି ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ମୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇଡ ରେ ଆମେ ସେଇଠି ବସିକି ଲେଖୁ ତାକି ଆମେ ଏସି ରେ ନ ଲେଖିକି ନର୍ମାଲ ଇଏରେ ଲେଖୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ନଏଜ ଫଏଜ ଆସୁଛି ଆମେ ପୁରା ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ କି ତାକି ଖରାପ କେତେ ବି ହେଇଯାଉ ସିଚୁଏସନ କେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉ साइट रे ऊपर छात भी गली पड़ू जमी आम लिखि पारू मैंने बिलीव नहीं कर सेमती लेवल आम प्रिपेयर होते वर्षा हो लोक चिल्लातु तब भी आम लिखिपारू तो मुझे कहूनी कि एते एक्सट्रीम लेवल भी कर बट एटलिस्ट यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आम से गोटे लाइब्रेरी साइट रे आम ये करूँ ओके तो मो कह कथा जो आप पढ़ुंट ये डेभलप कर आई थिंक अभी तुम पाखे बहुत टाइम अच्छी there will be I think 80-85 days 85 days is more than enough to develop this skill ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଯେତିକି ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ପଢିଥାନ୍ତେ ନର୍ମାଲ ସୋର୍ସ ରେ ମୁଁ ତା 10% ମାନେ କଣ କହିଲ 100 पेज ତମେ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ କରିକି ତମକୁ 10 पेज ରେ ଦେଇଦେବି ମତେ କୁହ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କେତେ पेज ରେ ଅଛି ମତେ କୁହ 800 ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଇଜ पेज କେତେ पेज 800 पेज रे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମरी ଦେଖଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି जोटा कि आमे बनेइछु ओटे माने पूरा फिक्स हेइनी तो बनेइक आपण देदेबी आपण यदि कहबो मैं देखि दउची स्पेक्ट्रम समरीटा मो पाखरे अछि 60-70 पेज रे चली माने हेइनी पूरा फिक्स एटा 60 पेज रु अधिक हबनी आपण कहबो मु पेज ऐड करी आपण देखै देबी तो तमे ता माने कोन हला तुमको मु 10 टाइम्स जदी मु तुमको छोटो कर देली देन आई कैन एक्सपेक्ट 10 टाइम्स रिवीजन फ्रॉम यू ना जदी तुमको 800 पेज पढी थांतो रेगुलरली मु तुमको 800 पेज जगह रे मु तुमको करे देली केते 61 पेज जमा देखो 62 पेज रे तुमको स्पेक्ट्रम 62 नै आउटे बढ़िबो 82 पेज नै जाओ 20 पेज बढ़िबो काई ना मु टिके ऐड करबी आउरी ऐड हेइनी तो 82 पेज रे तुमको मु दे देली तो 10 टाइम्स तमरो मु पेज को कम कर देला नै मते को तो आई कैन एक्सपेक्ट 10 टाइम्स रिवीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम yes or no यस so that is what I am saying I am not Yes. expecting anything मु बस एतिकी आपन तो एक्सपेक्ट yes करूची sir कि 10 थरो तमे पढो 10 थरो पढिला पर देखो तम माइंड रे से माने बुझौछ नै माने क्वेश्चन देखिला पर आपे आपे एमती माने देखिला पर आपे आपे आंसर तम मुंड रो फ्लो होवा स्टार्ट हबो सेते बेले कोन हबो तम थिंकिंग प्रोसेस आउ कि दरकार नै आपे आपे तमे आंसर राइटिंग माने 7 मिनिट कोन ता पूर्वरी लिखि पारिबो सेही लेवल रे प्रिपरेशन करिया पड़िबो वी हैव टू डेवलप आवर कंटेंट ऑन दैट लेवल हला कि तो हमर सेकंड पार्ट हे गेला हमर कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन आपन कहि देली बॉडी रे स्ट्रक्चर बहुत भलो दरकार तापरे बॉडी रे सबले बुझिबे क्वेश्चन कोन पचारुची आ आपण रैंडम लिखिबेनी जेमिति क्वेश्चंस थिला म आपण देखौची आपण माने सब लिखिथिले म देखि कि बहुत मजा आस्ता माने मु एते हसीची एटा देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया एटा आपण माने बुझिचंदी भलसे भलसे लिखिचंदी एटा मु रिप्रेजेंटेशन ने आपण कहबी केमति भलो करिवे हाउ डिड एटा केही गोटे लिखि पालेनी हाउ डिड द 73rd कौशल अमेंडमेंट एक्ट ट्रांसफॉर्म पंचायत राज सिस्टम एटा केही गोटे भलो लिखि पालेनी आपण माने कोन कहले पंचायत राज रो प्रोविजन को भरि देले सो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और हाउ इट ट्रांसफॉर्म द पंचायत दैट इज व्हाट डिमांड यू आर राइटिंग एवरीथिंग इज ओके बट यू आर नॉट लिंकिंग हले कि मु तुमको यदि कहली कि मते मते कहि दियो जिबार अछि मनगर एबे भुवनेश्वर जिबार अछि को रास्ता रे जिबी तमे कहउछ कि हां भुवनेश्वर एठु गले फ्लाइट रे जाई परिबो बस रे जाई परिबो बसी पडले ही जुओ एम टाइप रे तुम कथा वार्ता करछ सो इट इज आई एम नॉट गेटिंग माय आंसर यू आर राइट यू आर सेइंग दैट यू कैन गो बाय फ्लाइट और बस ट्रेन but you are not saying exactly you can go to this place and then there will be airport from there you will go to this place you are not saying me the exact way so in that case देखो किछ समय पर मते लागियो तुम गोटे पागल पागल लागला पर मु किछ क्वेश्चन पछारिबि तो हां ठीक है हेतो पळे पळे तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कोन पचारुचंदी सेकंड पार्ट रे पचारुचंदी हाउ 73rd कौशल अमेंडमेंट ट्रांसफॉर्म पंचायत राज सिस्टम देखो first one you have to write before that there is no uniform structure now it is there is a uniform structure so uniformity will bring uniformity all over the India so if there is a uniformity we can identify what error what kind of problem is there na
Second, earlier election was not compulsory. We have made election is compulsory. So regular election, regular accountability is there. Na? You have all written that regular election, but you have not said that regular election led to the regular accountability. Na? Accountability word is this transformation. Na? You all are writing right answer, but not in a good way. Right answer in a wrong way you are writing. Then you have said that 33% reservations to the women. Led to the women empowerment, you have to write now. Participation of the more than 50% of women in Odisha itself. Odisha provides 50% reservations to the women, na, Panchayat Raj. Na. Then you have to talk about it provide, Panchayat is a unit of socio-economic planning and implementation, and development. You have to talk that, okay? But that is what led to the we are giving this decision making to the people those who are affected. So we are empowering local bodies. So that is a transformation. This is the real democracy at the grassroots level. So heading, हमको heading भी proper दबा दरकार. ता भीतर point को भी भला दबा दरकार. That is what you all are missing. Not able to do that properly. बुझी पाले की बुझी पाले नहीं जिसका मुझे कहली. So that is what I am saying. Context missing होची माने कौन? Again, sir. Good 10 minutes. बस good 10 minutes ठीक है खाली बोलो. Just a minute. हाँ तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଯଦି ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି whatever the demand of the question you should write like that. You should not write whatever you know. Okay? तो ଆମେ second part ବୁଝିଗଲେ context ମାନେ କ'ଣ? Context ରେ କିଛି doubt ନାହିଁ. Introduction ହବା ଦରକାର, body ହବା ଦରକାର, conclusion. Conclusion କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ way forward ବି କହି ଦଉଛି. ଦେଖ polity ରେ ଯଦି ଆମେ way forward ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି way forward ଲେଖିବେ ମତେ କହିଲେ? ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି way forward ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? What are the reform in the constitution ନା? Positive ଲେଖା ହବ। सर वे फॉरवर्ड माने सॉल्यूशंस ना सर ତ हाँ, କ'ଣ solution ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇପାରିବ। हाँ ମୁଁ ତ ଦେଖ ଆପଣ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ଟେଲ୍ ମି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ସୋ ଦି ଅଫିସ ଅଫ ସ୍ପିକର ଇଜ ପଲିଟିସାଇଜ ଅଫିସ ଅଫ ସ୍ପିକର ଇଜ ପଲିଟିସାଇଜ ଇନ ଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏବଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ସମ୍ ସଜେସନ୍ସ ଟୁ मेक इट ए पॉलिटिकल न्यूट्रल ऑफिस कौन सजेशन दो मत कहलो सर जो तुम पाखे Sir, स्ट्रक्चर नहीं तुम ଆପଣ पाखे ତ आंसर हाँ ମାନେ କୁହ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହବା ଦରକାର ମାନେ ଲୋକସଭାରେ ମାନେ ଦିଟା ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଆଉ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ମାନେ ବାୟସ୍ଡ ଯେମିତି ନ ହେବେ ପାର୍ଟିରୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଯଦି हाँ हाँ ବ୍ରିଟିଶ ଭଳିଆ ଯେମିତି ପାର୍ଟିରୁ ଯୋଉ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। देखो तुम सब आंसर दौच बट मु तुमको आंसर पचारे तुम स्ट्रक्चर पचारूँ जदि तुम अगर स्ट्रक्चर ना तुम पॉइंट भल बन पारनी सो फास्ट यू हैव टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ना व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म वी कैन ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ना ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन रिफॉर्म लाई पारिबा कि वी कैन से दैट वी कैन ब्रिंग दैट वंस ए स्पीकर इज इलेक्टेड इनटू स्पीकर दैट पर्सन मस्ट बी रिजाइन ना सर हाँ हाँ को सर जेମିତି यूके रे अछि कि नहीं सेटा हम कोई मु तुमको स्ट्रक्चर रे बनौछि देखो एटा हला गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल हम कोन रिफॉर्म आनिया लीगल रे कोन रिफॉर्म आनिया ना जब भी तुम वे फॉरवर्ड लिखुछ तुम पॉइंट को डायनामिक हवा दरकार देखो कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन रिफॉर्म कोन आनिया लीगल रे कोन रिफॉर्म आनिबा थर्ड रे कमिटी को कमिटी कोन रिकमेंडेशन दिछन ना मु कहूछि तुम जा सुबश्री कहू कि मु तुम पॉइंट आ बेटा ऐड करबी कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ना कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन रिफॉर्म करि परिबा गोटे गोटे करी स्पीकर को हमें न्यूट्रल बनया पाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन रिफॉर्म करि परिबा अमेंडमेंट कर अमेंड करी कौन करिया अमेंड ऑब्वियसली अमेंडमेंट करिया कौन करि परिबा हमें करि परिबा कि स्पीकर वांस इलेक्टेड नीड टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी जोटा कि हमारे बनाई बट यूके रे अछि सेटा है लगे और वी कैन से दैट व्हाइल the appointment of the speaker should be consensus it should be acceptable to the ruling party as well as opposition मतलब अगर reject देखो for example currently simple majority we can make this a special majority also ना
so that the person that is being elected to the speaker is accepted to everyone. That is what constitutional reform. Then you can talk about legal reform. So legal reform means we can modify the procedure, conduct of the business, procedure of the parliament, anti-defection law, so that speaker is more of speaker of the house, not the speaker of a political party ना. बुझिपार कि ना देखो जो हमरो पार्लियामेंटरी प्रोसीड्यूर जोड़ा अछि दीज आर कॉल्ड लीगल रिफॉर्म ना लॉ के अंदर अछि ना कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंटरी भीतर रिफॉर्म अछि और लीगल रिफॉर्म भीतर डिफरेंस कौन है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म माने हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे जो रिफॉर्म हमें करि परिबा माने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिबा लीगल रिफॉर्म मींस लॉ रे हमें कोन रिफॉर्म करि पारे लॉ माने जोड़ा पार्लियामेंट लॉ अछि देयर आर सो मेनी प्रोविजन दैट इज फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कोन हमर लॉ ना 1951 तो एको यदि तमे रिफॉर्म करिवो ताको हम कहबा लीगल रिफॉर्म आपण यदि कहबे कि नाही मु इलेक्शन कमिशन रे इलेक्शन कमिशन ईसीआई को मॉडिफाई करिवो बॉडी को हम चेंज करिवो ताको हम कोन कहबा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने मॉडिफाई करले एटा लॉ रे मॉडिफाई करले लॉ मॉडिफाई करिया बहुत इजी कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई करिया पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार ओके यस सर, थैंक यू। देखो मु तुमको कहूनी कि सब जगह रे एमती पॉइंट मिलियो एटलीस्ट यू माइट हैव 2 पॉइंट्स हियर यू माइट हैव 1 पॉइंट्स हियर यू माइट हैव कमिटी माइट हैव 3 पॉइंट्स हियर ना okay so committee you can talk about the second ARC recommendation you can talk about any other committee if they are giving any recommendation na then comparison of the world constitution je subhasri gote बढ़िया point कहले so subhasri जो कहले हमर point टा यूके रे हमर कोन once a speaker always a speaker ना ता माने तमे यदि गोटे थर तमे स्पीकर बनी गले यूके रे तमे लाइफ लॉन्ग जेपन चाहिबो स्पीकर बनी छारिबो एटा कोडी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नाही बट तांकर एटा एक्सपर्ट देखो तांकर कोन हेतला यूके रे गोटे थर जो स्पीकर थिले तांको एगेंस्ट के जड़े कंटेस्ट कर देथिले ताको पूरा हरेले एते जोर रे ना से लाइफ रे आगु के साहस करना दी ताको एगेंस्ट रे कंटेस्ट करिया पय ता माने हमर जो स्पीकर अछन से माने दी वंस स्पीकर बनी गले जते थरो चाहिबे से माने अनअपोज्ड इलेक्ट हेबे तांको अपोजिशन के ठिया ही हेबे नाही सो जदि हमर जे स्पीकर अछन तांको कंफर्म कि मोर लाइफ लॉन्ग टाइम स्पीकर रहिली सो ती आ को पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करिवे why that person is supporting at this moment because this person know that after 5 year anyway I am going to contest the election and to contest election I need support of my party so that is the reason he is supporting that party so this point of Subhasri is very good once a speaker always a speaker na So there then should also hamara be power. There should be also power to given contempt of parliament के लिए कुछ पावर देना चाहिए स्पीकर्स के पास में ज्यादा स्पीकर का पावर मिसयूज हो जाए हमारा इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ स्पीकर ना we can also give the supreme court judgment of the supreme court na supreme court judgment talked about the speaker of lok sabha is almost equivalent to पता है आपको supreme court judge chief justice of india के बराबर है do you know the order of president order according to the order of president the speaker of lok sabha is equivalent to the chief justice of india order of president के हिसाब से if a person is holding such a high position that person should raise above the petty politics to act as the speaker of the house not the speaker of the political party so supreme court observation you can write here also देखो at least if you are adding one point you are getting 5 point in your way forward na and the way forward you are writing they are very dynamic very diverse and the person is looking into that they'll feel like वाह क्या लिखा है but आप तमने कौन खाली कोच खाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दियो किए भी पागल है जो भाई एटा कोन किछि जानि नि उठी पळे आसे खाली ब्लफिंग करूची भाबो गोटे तमे एटी दीटा प्रोविजन 8 लिखितला एटी दीटा छटा आइगला अलगा अलगा ना so my point is whenever you are writing anything explore the point in this diversified way जब भी तमे वे फॉरवर्ड कथा कहूचो चाहे anything it can be you know how to make our speaker more efficient so you can talk about constitutional reform हम कोन करि परिबा what kind of constitutional reform we can bring about ना Prabhat, actually, we are basically talking about how to make reduce. You know, question is about misuse of the speaker power. So, if you give more power, speaker is going to misuse more. Yeah. It is. देखो, we are not discussing answer actually. I'm just saying how you are going to explore the points. Na? You can give me any constitutional body or anything in polity by using this 5 points. We can explore 5 way forward. ना? कोई सा भी मुझे बताओ मैं करवा दूंगा आपके सामने.
Election Commission of India, how we can make our Election Commission of India independent body. We can talk about constitutional reform ना, currently how our Election Commission is appointed, कैसे appointment होती है our Election Commission को? सर पुराना क्वेश्चन जो पूर्व क्वेश्चन में डेप्यूटी स्पीकर तार येटा लिखते हैं कि माने ये नहीं अपॉइंटमेंट डेप्यूटी स्पीकर जो एबे वैकेंट अछि सेटा को किसी लिखिया होतले नहीं नहीं, question is all about speaker, so we should focus on this speaker. Okay, question is all about speaker, so we should restrict ourselves to the speaker. देखो ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରା ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିଲି ତମର ନାଁ କଣ, you should focus on your name. You should not write about name of your village. So I think जो whatever asking in the question, we should focus on that rather than writing it here and there, because this is what called bush, beating around the bush, so maybe create negative impression. Okay, ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, 5ଟା ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ମତେ ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ଇନସାଇଟ୍ସ ମିଳିଗଲା ଆ ଭିତରେ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି while you are writing you have to write like that, ତାପରେ ମତେ କହିବେ କଣ କେମିତି ତମକୁ ମାନେ ଭଲ ହବନି ମତେ କହିବେ, ଆଉ ଡାଉଟ ରହିବନି। ଏ ଯୋଉ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ସାର୍ ପଢିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନା ସାର୍? ଦେଖ ଦିଟା ଜିନିଷ ବାବା, ଦେଖ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ପଢିବା ତାପରେ ଶିଖିବା, ଦିଟାକୁ ପାର୍ଲାଲି କର। The moment you know this framework, so whenever you are reading the suggestion of anything, so you can link that na. For example, how to make our comptroller auditor general more powerful. You can talk about constitutional amendment. Now the CAG is appointed by the government solely, so we can make a body, a 3-member panel comprising of Chief Justice of India, Leader of Opposition, and Prime Minister. So they should appoint on the basis of majority. 2 members need to be supported. So we can ensure the CAG is a neutral body na. So this is what constitutional reform na. Then we can say legal reform. So CAG power is derived from the Comptroller Auditor General Act 1949. Kalam, yesterday only we have discussed that na. So there we can amend to give more power, more autonomy to the CAG, so that they can do lot of audit, they can submit report, you can talk lot of things. So this is what called legal reform. Then you can say committee. Yes. सर मो माइंड रो गोटे क्वेश्चन थिला सब बेले कि जदि यूके रु जदि सीएजी यूके रो जेमति सीएजी कंट्रोलर हे परला तो इंडिया रे कोन पई से केवल ऑडिटर जनरल माने मु सेटा एपर्यंत बुझी पारिनी सर। मते को तुमको लागुची इन डेमोक्रेसी we should give this power to a to a person who is not elected by the people. हां सर, एक्चुअली एटा मु भाबी नथली। देखो democracy is all about the people's control, so public parts should be controlled by the people, and we are not direct democracy, so indirect democracy. So that is the reason our parliamentarians should control. It should not be person who is not elected can have control. So that is what led to the more problem. Even CAG is creating lot of policy paralysis. आपको पता नहीं पता? I don't know whether you know it or not. So because of CAG, so during 2014-13, so a lot of policy paralysis, I think all these things going on because it is because of this CAG only. देखो एडमिनिस्ट्रेशन तुम जानी थी बहुत कॉम्प्लेक्स। मु तो गोटे बढ़िया एग्जांपल दोजी। देखो तुम मान लो डिस्ट्रिक्ट डीएम अच्छो, तुम डिस्ट्रिक्ट रे इन योर डिस्ट्रिक्ट, सो देयर आर लेट्स से 100 crores funds are there for development of education. भलसे पूछो, in your district there is severe cyclone, severe disaster, so there are let's say around 1 lakh people in dire need. If you not feed them, they will die. There is no other option. But on the you have 100 crore in your district fund in your control, but that fund should be allocated for education. But your people are suffering, they will die, but you have anyhow not able to connect it to your chief secretary, or chief secretary said that whatever you do, it is not your responsibility, I am not going to look into that. So you have taken a decision that I'll feed that money to all these hunger people, but later on maybe CAG, during CAG audit, they find that how come you divert the money, this money is meant for education, so why you have siphoned out? Because if a money is meant for something, you cannot divert that money for other purpose. So that create lot of problem. And next time the young officer, what they will think, so मरे लोग हमें क्या जा रहा है, it's not our responsibility. अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो CAG हमें जेल में डाल रहा है, cases there, so they are doing lot of harassment just because we are doing good things. So later on people will not take any decision. So that is what led to the policy paralysis ना। बुझी पाले निस। तो CAG ऐसे में नहीं कि बहुत एकदम पूरा मस्त बॉडी गोटे माने पूरा पर हेवन, इट इज लाइक अ गॉड, नो।
So if you are giving unnecessary power to anyone, so they are going to exploit. Even Supreme Court judge, if you are giving too much of power, that is also very dangerous. So that is the reason we are not giving this comptroller power. Thank you, sir. ठीक अच्छे आपण माने बुझी गले तो आगु को बढ़िवा. ଆଜ୍ଞା sir। Yes, sir. अरे क्या लिख रहा हूँ लिख there is a problem in my while I am writing and saying, my brain function little bit of faster, my hand little bit of slow, so थोड़ा बहुत ये sync में issue होती है. चलो, so next thing I think मैं I've already discussed about the context. So then तुम्हें conclusion केमिति लिखिए मते कुछ. How you are going to write the conclusion? देखो, conclusion should be always way forward, like futuristic. Even if everything is bad, even if there is nothing happen, for example, corruption is there, widespread, everything wrong, then you can say there are problem, no doubt, but there is a way forward. You have to optimistic. You have to optimistic. You have to, for example, promote cooperative federalism. Cooperative federalism. You have to use the keywords. For example, help in promoting democracy at the grassroots ना local, जैसे बोल सकते हो ना, democracy at the then you can talk about, for example, जो भी जिनसा अच्छी, everywhere you can use some keywords ना, जो keywords को तुम्हें add करी पारिबो. Cooperative federalism, grassroots democracy, आउ कौन अच्छी, मतलब कहलो किसी keywords कहलो वाला कहलो. वेलफेयर ऑफ द पीपल, जैसे ना कि हमरो प्रिएम्बल रो वर्ड को तुम यूज करो, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ना. Socio economical political justice, this will go a long way in delivering socio economical political justice for the national, for the scheduled tribe, for the scheduled caste, for the women. सब बुझी पाले कि नहीं आपण ए जिंस को लिंक करिया को सिखंतु. माने कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, इट शुड बी यूज सम कीवर्ड्स. हम क्या ऐड करिया पड़िबो कि मैं तो तळ को नहीं जाउची. Optimistic, add the key optimistic words. Good governance. है कि होप आप लोग भल से लिखि पारिबे. सर आ गोटे मोर डाउट अछि सर, मो जो हैंड रिटन टा टिके भलो नहे तो सेटा केमती कोन ताको ठीक करिया पे, माने कोन देखो तमे 24 into हम बुझी गेली, तम बुझी गेली काई ना तमे जो प्रॉब्लम मते कहलो कि देखो तम प्रॉब्लम जो फेस करनो भी मु बहुत एसो प्रॉब्लम फेस करछि, तो तमे टिके कहले मु सब बुझी जीवी. तमे जो प्रॉब्लम करू ना मु तो कोन कहबी, माने सिचुएशन एते खराब होतला. मु जे समय देखुतली मेंस, मु आखा पाखरे केही नथिले कि जो माने मेंस लेखिछन, तो मु काटो सजेशन भी नहीं पार नथिले. मु निजे ही सब डेवलप करी, सेते मु कहि दउ तुमको. तो मु कोन करे बस नाही, मु एमि बसी कि जल खाली अछि ना एमति लेखुता है अबाउट एमति, माने गोल गोल करके लिखिया को ट्राई करे. गुड कीपिंग एमति, माने खाली जो बसनो कि खाली बसी कि मु एपटे कोन थिंकिंग करथि, मो हाथ में चालू थो. So by using all these things, you can improve the legibility, or legibility you can improve by writing, for example, about. First two words should be very good, and last two words should be also good, and in between anyone can understand what you have written. Okay, जब भी हमें पढ़ती को भी वर्ड को हमें स्टार्टिंग लेटर और एंड लेटर को देखिकी पढ़ती, बाकी मझी लेटर को हमें इग्नोर करते. हमर दिस इज व्हाट पावर ऑफ आवर आई एंड ब्रेन. सेटा मते पता, this is what I come to know, I am explore during this knowledge I am come across, I think like just like you people are quite concerned at that time, I was also concerned कि मैं केमिति को भलो करिवि. So once I am searching, I come across there is a good way, so they have shown me so many words
try to guess what is the meaning of that words. I have successfully guessed. They have just given starting words and end words. So from there, I comes to have the understanding that only we need to write clearly the starting two words and end two words. By looking into that, you can predict what is the meaning of that word. Okay, Prakash. So you can write clearly starting two letter. जो स्टार्टिंग रे जो दिटा अल्फाबेट और लास्ट दिटा अल्फाबेट को भलसे लेखो बाकी दरकार नहीं छी आप आपे बुझी जिवे ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ठीक अछि आई थिंक कॉन्टेक्स्ट इज ओके तो आगे बढ़ेंगे यस सर तो नेक्स्ट हमर कौन थला आईडी नेक्स्ट हमर थला प्रेजेंटेशन नेक्स्ट हमर कौन थला आईडी प्रेजेंटेशन सो दिस इज व्हाट अ रियल देखो let's be very real. Let's be very real. You should not be hypothetical like I'll write this way that way. So what is the amount of time you will get for 15 marker question? 15 marker question you will get around 11 minutes. So in this 11 minutes you have to read the question, understand the question, you have to write the question, everything. So it is not possible you to write the way you are writing. For that what you have to do, you have to use some diagram na, half moon diagram na. This is called hub and spoke model na. For example, what are the reads power? You can write this way, you can write this way. So one part of the answer definitely you have to use this diagram. For example, evolution diagram. जैसे हमने I think काली राम क्वेश्चन देइथिलु evolution of panchayat. So you can write the evolution of panchayat like this na. For example, you can say this is ancient period. Village self local self group क्या था वो village सभा समिति. Here it is time. Here it is development of local self government. This axis ना तो village तापर हमर कोन हला medieval period ना जहाँ भी तमर अछि तन ब्रिटिश पीरियड कोन डेवलप हला हम लिख पर एपटे गोटे तापर कमिटी आसिला तम जदि एते नो एक्सटेंड करी एमती भी धीरे धीरे एक्सटेंड करि परियो ताकि भलसे लिख परियो ना. This is what you are showing in a graphical way, or you can evolve that. Instead of writing that, there is other way also. How you are going to write? You are going to write in this way. First, you can write about ancient period. This is what happened in ancient period, medieval period. Then this is modern period. All these things you can write box now, or you can write ancient. This is what happened. Then medieval. This is what happened. In modern, this is what happened. Post independence. This is what happened. Then we have implemented National Extension Service and Community Development Service. It is failed. So that is what led to the government established multiple committee. क्या क्या committee आप लिख परिवे? National Extension Service, Community Development Service. हम लिख रहे failed. Establish. फर्स्ट हमारा बलवंत राय मेहता कमिटी ना BM committee. I am not writing detail. You people are quite talented. Ashok Mehta committee, LM Singh B committee. So देखो and their suggestion you can write na. One suggestion is possible, not all. So then you can say about after that 73rd Constitutional Amendment Act, constitutional status. You have to write the evaluation, or you can do same thing in a other way as well. For example, you can draw a diagram like this also. Ancient period, then explain kya tha. Then here it is medieval period. Explain what is there in medieval period. Pre-independence, then post-independence, then community extension service, then something the committee formation, then 73rd, 74th, then finance commission recent grant. This way you can start now. This way you can give this error. So that means this is the way of evolution. Na? That is what called presentation. The more you write in a presented way, so you will get good marks. Okay. For example, you can need to draw the India maps. So three tasks that I am going to give you everyone. So draw map. कौन सा map में expertise होना चाहिए. अगर किसी ने नहीं कर पाएगा ना मैं छोड़ूंगा नहीं सच में. So किसको चाहिए हमें India map. मैं आपको सिखाई देवी. Don't worry. मैं आपको सिखाई देवी. इधर draw ना कोई पारिबे ओडिशा map.
So they are going to helpful for drawing, making our answer more interesting. For example, discuss the forest resource of Odisha. So do you think that you can write everything, or else you can just draw the Odisha map and show these are the forest area? Just imagine how much impression you will create by having this map, na? I think some day back, so कोई मुझे बात कर रहे थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. Let's say we are talking about हड़प्पन civilization. ठीक है? No need to write, exact map. No need to write the exact map of India. Okay, just if you just know that. ठीक है, हड़प्पन civilization. So this is what you can draw the Pakistan. It is Afghanistan, Pakistan. Then give the location. These are the हड़प्पन location. Na? If you want to write about the Mauryan Empire, Kalinga Empire, you can give this. This is the Kalinga Empire. So that is what makes your answer very unique. So put that in box. Okay, ओडिशा में आपने बोला बढ़िया कि ना करथली भूली गले. कोई जरूरत नहीं भाई एक्सपर्टीज बनने का. यहाँ कौन सा तुम्हें पीएचडी कर रखे मार्क दे देंगे. नहीं, ओडिशा में आप हो गया है क्या? पोलियो हो गया लग रहा है थोड़ा सा. सॉरी, प्लीज प्रैक्टिस इट. ओके, ये पोलियो है गला. तो जब मैं वो फॉरेस्ट रिवर गोटे देखा, दिस इज महानदी ना. तो कहते बढ़िया देखो तुम वे रिप्रेजेंट कर पारिबो ना. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो मास्टरी ऑन दैट. एमती नहीं कि महानदी रिवर ओरिजिनेट एंड दे फ्लो एंड देन फ्लो एंड देन फ्लो एंड देन गो इनटू बे ऑफ बंगाल एंड देन ड्रेन ऑल इट्स वाटर. किसको पढ़ रहा है तुम्हारा आंसर? कोई मतलब ही नहीं है किसी को. सो द मोर यू राइट इन इंटरेस्टिंग वे, सो यू विल बोलते हाथ डाल के खींच लोगे मार्क्स उसका अंदर से ना. सो यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन लाइक दैट. ओके, या माने रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट अच्छी मते कहि पारंती. मैं आपन देते से आगे बढ़िया, मैं आपन सिखेबी और भी बढ़िया बढ़िया तरीका. प्लीज मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव. आपण शांति बसिले मु केमी जानिबी कोन चली छी. नहीं सर, डाउट नहीं. हाँ, जेमिति आमे देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यू कैन राइट लाइक दैट ना. लिस्ट जो आपण माने बहुत जिंस लिखुचंती कि जो हमर 7 शेड्यूल माने केमिति लिखुचंती मु जानि परनु. तो एटा हवा दरकार यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ना. एटा आपण बनै परिबे आर्टिकल 246 ना. This is what called representation. The more you write in this way, you will get good marks. Okay. So I think ମୁଁ ତିନିଟା ଉପରେ କଥା ହେଲି. कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड रिप्रेजेंटेशन. मते लागुची आपण माने को डाउट अछि यदि मते पचारंतु, माने हम या पर आ किछि डिस्कशन करिबा. सर आ गोटे ऑप्शनल कथा टे कोन केमदी कोन प्रिपरेशन. नहीं बिल्कुल बिल्कुल मोर गोटे ऑप्शनल पे गोटे जनरल स्ट्रेटजी तुमको कहि दउची. दिस इज वैलिड फॉर ऑल ऑप्शनल. हला कि देखो ऑप्शनल तुमको कौन करिया पड़िबो. मेक समरी नोट. कौन करिया पड़िबो? रीड. केते घंटा पढुछो दिन? 4 to 5 आवर आप तुमको ऑप्शनल पढ़िया पड़िबो. पढ़िया तो अगर इफ यू आर गिविंग 10 आवर की करी देन 4 to 5 आवर तुमको ऑप्शनल पढ़िया पड़िबो. 4 आवर भी काफी अच्छी ऑप्शनल पाई कहीं ना गोटे पेपर ना दीटा तो नहीं. 4 आवर इफ यू आर गिविंग 10 आवर डेली देन 4 आवर तुमको ऑप्शनल पढ़िया पड़िबो. ट्राई टू कवर 3 आवर रीडिंग एंड 1 आवर ऑफ समरी मेकिंग ना. कौन करिया पड़िबो बाबा. देखो तुम समरी एबे मेकिंग करिवो तुमको लागिवो आई एम वेस्टिंग द टाइम, बट यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम. देखो मु तुमको देखो एबे मनगर तुमर इनकम अछि 1 लाख. तुम 1 लाख रे या तो तुम मस्ती करके एकदम एंजॉय करो जिंदगी. यू कैन डू दैट. But you can enjoy your life. But if some emergency is there, then you cannot do anything. But if you are, let's say you are using 40,000 for your day-to-day life and you are investing 60,000 anywhere, so in case of emergency, you can use that now. So it is not helpful now, but during your emergency, this is going to be support. Same thing. If you are extracting 1 hour daily from your study and making summary notes, for example, if you have studied about Aristotle principle, this can be those who are having the polity as a PSI as optional,
what are the what is the relationship between India and USA. So you have to make a summary of everything in a single page कि challenges क्या है, then good green silver lining क्या है, green suit क्या है, मतलब good relation कहाँ कहाँ है, then data, fact, conclusion. If you are writing everything in a single page, so 10 days before examination you can do 3 times revision of your optional, and that is going to be real helpful to write a good answer. If you are not making notes and you think that I will revise everything, you will not able to revise. आपका इतना लोड बढ़ जाएगा, इतना हेडेक होगा, पढ़ाई छोड़ के आप मूवी देखना शुरू करोगे. So that is the problem, mistake everyone is committing and no one is guiding them. So read 3 hours, make summary note of 1 hour, and if possible you are finding, write some questions daily basis, 2 questions daily. ठीक है, 2 क्वेश्चंस डेली एंड सम वीकेंड्स, जैसे हमारे जेमती सैटरडे ऐसे नहीं तुम पाई. यस प्रभात. सर आप जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को पढ़ लेंगे, फिर नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्शनल. Okay. It is about the optional I'm talking. Okay. So daily two questions you have to write, just like you are writing here. Okay. And if you possible to evaluate, if there is evaluation possible, then do that. Otherwise, no issue. Just have some model answer. I think जो भी तमे पढुछ तार त भलो भलो मटेरियल अछि. तमार ऑप्शनल कोन बटे कहले जो माने मेंस लेखुचंती. सर हमर पीएसआर पीएसआईआर ପାଇଁ देखो भलो मतलब सपोर्ट अछि तमे जानि छ किए भलो अछंती. आगे देखो पढ़िबो तो भल जगह पढ़, चिंदी जगह पढ़ना, चिंदी जगह पढ़िबो से निजे ही जानना कौन तुम पढ़ेबे. सर मैम ठारू सर मैं करथिले गोटे थोड़ा क्लास करथिले. ओके. कि नहीं सर भल माने जगह पढ़, बुझियो तुम क्या कहछ, भल भल जगह पढ़, भल किना ताको नोट्स बनाओ हला कि. नोट्स माने हम कहल देखो तुम यदि 4 घंटा रे पढुछ, इफ यू आर स्टडीइंग फॉर 4 आवर, 4 आवर को तुम डिवाइड करो, 3 आवर रीडिंग प्लस लेट्स से 30 मिनिट्स तुम नोट्स मेकिंग करो. माने जेमते हम कहले नि हम पॉलिटी रे मु देखैली जेमते नोट समरी नोट्स हमें बनाउचंती, सेम note making, structuring is hua dakar. Then 30 minutes answer writing. Whatever you have prepared and studied in that particular day, make answer of that. Answer writing of previous year question or any questions, or you can write the UPSC questions also. Okay. एमती sequence तुमको चलेगा पड़िबो. तमरो गोटे थरो न, once you have ready the summary notes, once you have ready the summary note, entire polity will be in 100-page notes. Just imagine 100-page notes you can revise before examination 10 times even. Before examination 100 page you can cover in one day also. Just imagine 10 times if you are revising, how much knowledge you are having, and you will write very good answer in your examination. Na? यस सर. ठीक है जी. हाँ. Any other doubt you have? Please सर go गोटे ahead. डाउट थिला. सर गोटे डाउट थिला. गोटे रे दिटा पचारो. हां गोटे तो ऑप्शनल डाउट अछि आ गोटे जीएस डाउट अछि. अच्छा गोटे रे दिटा गोटे है गेला दिन सही. जो जय हो. हां को. सर ओटा जो क्वेश्चन थिला, द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट पार्लियामेंटरी कमिटी. In the light of the statement, discuss the role of the PAC in establishing the financial accountability of the executive. माने ए क्वेश्चन टा मु लेखि आपको पठेइ देली. एतरे माने देखि जेला खाली पढि देली. एक्चुअली माने बुझी ये पार जानि नथले. पारोनी तमे जो लिखितले ना. एते किछि बुझी पार नथले. बस किछि भी पैक रो पैक जगह रे क्याग जगह रे पैक मु बुझी गेली. मते पढि की बुझी पारलेनी मु कोन लिखि छ तमे. सर पैक रे क्या रो भी तो रोल अछि ना, जे तो से फेयर एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक नहीं देखो अकाउंट. देखो तो कैग सेटा कंट्रोलर मैं तो कहूँ, देखो एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर रोल. ऑडिटर जनरल कौन करुची, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑडिट करिकी रिपोर्ट दोची, माने रिपोर्ट सबमिट करची. आफ्टर दैट पब्लिक अकाउंट कमिटी विल गो इन डेप्थ एंड सी ऑल दिस कमेंट्स, एंड दिस कमेंट देखो कैग जो होची न्यूट्रल बॉडी, दे कैन नॉट कमेंट द इरेगुलरिटी ऑल दिस थिंग्स. And if they highlight somewhere there is a irregularity, and that can be a good point of discussion and debate in the PAC. And public account committee being a small body, so they can go in detail and find where there is a exigency or corruption or misuse of fund, and that can be a good point for parliament to debate, discussion, and making our executive accountable. देखो you can give there कि जो PAC without PAC, so parliament may not held
the government accountable in financial matter, because parliament is immature, so the people are immature, so they don't have an idea. Okay, so you can say that even if जो PAC हमारा होची public account committee, the chairman is from the opposition. आपको ये पता? I don't know, you know it or not? Who is the chairman yes of sir. the public account committee? He is the opposition member. So opposition member हाँ जदि chairman अच्छी से छाड़िबो government को यदि किसी problem अच्छी. ସେ ତ accountability Yes. ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ଆଉ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। हाँ, so that is the reason the PAC is very important. Without PAC, like if parliamentarian are like laymen, they don't have any idea about financial. I think even we don't have any idea. मुझे if someone is giving us some accounts, we don't understand what is this account. I think we don't able to find whether corruption or not. We can identify corruption if someone is given highlights and say that look, this is the sanction money, this is the money they have wasted, so this is what corruption. Then only we can find. Na? Same thing happened with the parliamentarian. They even not have the education of the 7th pass also. Anyone even unpad bhi parliament जा सकता है. So in that case, it is create lot of problem. Na? So they will not understand where is corruption. But by reading this report, they will identify where is corruption and where is the corruption. So that can be a good point debate discussion in the parliament. Okay. ନା actually ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି PAC is establishing the role of executive ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି parliamentary, ହଁ establishing the financial accountability of the executive, ଏଇଟା ମାନେ କଣ? ବୁଝିପାରିଲାନି। देखो PAC कौन करूଛି मत देखो पब्लिक अकाउंट कमिटी व्हाट ही इज लाइक व्हाट दे आर डूइंग, they are studying the reports. देखो CAG कहबनी कि this is corruption. CAG is not saying what is audit. Audit is not about, audit will never say this is a corruption, this is not, they will not say like that. They will just highlight this might be some irregularity, this is what mismatch. They will just highlight and send this report to the public account committee, and public account committee headed by opposition members. So they will see how come this there is a mismatch. If money is allocated 10,000 crore, then why they have spent 12,000 crore, and if they have spent 12,000 crore, where they have spent. So they have to debate discussion together, and then they will invite even the minister concerned कि आप कहाँ इसको spend को date spend करो तार मतलब हमको receipt दिखाओ. If they will not give receipt, then that is what going to be a debate in the parliament. If in parliamentary debate, if there is exposure that this government have involved in the corruption, so high chances that demand for the no confident motion, and people will have a negative emotions towards this government, and next election they are going to defeat. So that is the reason, and currently every government will be very careful that while we are spending money, we have to be very careful, because anyway our account is going to be audited by CAG, and later on that is going to be seen by the public account committee, and that can be a good point of debate discussion in the parliament. And then people will see that we are involved in the corruption, and when we are involved in corruption, our image will be collapsed, and our image will collapse, so we will not win the election. So that is what the accountability they are fixing. This is this chain of incident happen. Okay, na? Am I audible, everyone? ऐसे Yes, sir. शांत मत बैठो, मुझे Yes, डर sir. Yes, लगता है sir. शांत पे। शांत मैंने पूरा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हियो ना, मते डर लाଗୁଛି कि कौन हैला। ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଯଦି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କିଛି ବି ଭୁଲ ରହିଲା, ତାକୁ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ମାନେ ତାକୁ ଅପୋଜ କରିବେ। ସେଇ ସପୋଜ ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ ର ଯୋଉ ରୋଲ ରହିଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ, ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ କରିବେ ରୁଲିଂ ସରି ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି, ସେଇମାନଙ୍କର The ରିପୋର୍ଟ opposition ଟା party no, ସେଇଟା committee no. PAC is having, let's say, member, the chairman is the opposition. The chairman of the PAC is opposition, headed by the, and chairman is decided everything. Ultimately, finally, what is going to be in the report, that is what decided by the chairman. जैसे हमें हुआ नहीं कि UPSC इंटरव्यू रे कौन होती 5 जन बसती है, सेंटर चेयरमैन बसती है. Ultimate marks is decided by the chairman. They will give suggestion, but ultimately here also PAC is going to decide what is your finality. So opposition if they are, so they will try to make the government accountable. For that they will give adverse comment, and this can be a good point in debate discussion in parliament. ତାହେଲେ ଏଟାର କନକ୍ଲୁଜନ ଟା କଣ ହବ? Conclusion ସେଇଟା ହବ କି ମାନେ ଦେଖ parliament is a big body, 545 or 550. It is not possible for them to make the government accountable real.
In financial sense, the PAC is performing the accountability role of the parliament. Being a small body, they regularly meet, they can held accountable, being as it's said by the opposition member. You have to write like that. माने ये पार्लियामेंट्री रोल फंक्शन करूची केमिति ना छोट बॉडी डिटेल स्क्रूटिनी करूची को जगह रे मनी खर्चला कोन कला जोटा कि पार्लियामेंट को दोची पार्लियामेंट को हेल्पफुल करूची तो पार्लियामेंट्री रोल को फुलफिल करूची so that is the reason it is called parliament is not complete without having this PAC public account committee पार्लियामेंट Okay, जदि sir. PAC न थांता ताले पार्लियामेंट जानि पार न थांता भाई कोटी कोन खर्च होईची केमिति खर्च होईची ना Yeah. I think ठीक है मॉडल माने आंसर भी पढ़ो financial तुमको गोटे insta रफ आईडिया आसी जिवो मॉडल आंसर financial इनको instability फाइनेंशियल को से instability को से examine करूची जोड़ा फाइनेंशियल chairman. नहीं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नुह करप्शन को प्रिवेंट करूछन करप्शन को प्रिवेंट करूछन हैला कि माने गवर्नमेंट जो मिसयूज करछि फंडिंग ताकू से माने पब्लिक को एक्सपोजर करूछन you can see here audit of oversight financial scrutiny then propriety माने कौन propriety means whether you are doing economic expenditure or not for example let's say I am going to purchase this mic so there might be a mic which is 1 lakh there might be a mic which is 5,000 there might be a mic something 50,000 we have to identify what is our requirement if a function can be performed by a mic of 20,000 30,000 then what is the point of purchasing a 2 lakh mic na so that is what called propriety if a function is performed in an economic way then what is the essence of purchasing a big huge amount of money तुम देखि दिबो बहुत जगह रे हमें खर्च करंती unnecessary so that is what called against the propriety government should spend a money in a way that is most economical that is the reason we issue tender in every issue ना जब भी हम कोई पब्लिक जो काम करछने टेंडर इश्यू करन ताकि कम कॉस्ट रे हमें भलो जिंस बनै परिबा ओके Again, sir. आउ किछि आपण मानकर डाउट अछंती अछि यदि प्लीज कहंतु Sir, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର ଗୋଟେ ଥିଲା क्वेश्चन ସେଇଟା ବି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖ ତମେ ଲେଖିବ ନା ଆगे ମୁଁ କହିଦେଲି ତମ କପି ହେଇଗଲା ନା ଏଟା ନା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେଥିରେ ବାକି ଲୋକ କଣ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନା अरे ମୁଁ କହିଦେବି ଡୋଣ୍ଟ वरी ଏଠି ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ ନିଅନି ମୁଁ କହିଦେବି ସବୁ ମୁଁ ନାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ନାଇଁ ଏସ୍ ତମେ ଲେଖ ମଡେଲ ଏସ୍ ସେ ଟିକେ ବ୍ରେନଷ୍ଟ୍ରମିଂ ହେଇପାରୁନି ସଡନଲି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମାନେ ପଢାପଢି ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖ ଡିରେକ୍ସନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଆନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ପଳଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଓଡିଶା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ପଢି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଲି ଯୋଉ ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୁଡା ସେ ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଢିଛି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଯେତିକି ତମ ଫେମସ କୋଚିଂ ନାହିଁ ୟୁପିଏସସି ରେ ସେ ମତେ କହିଲା କି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ କହିଲା କି ଆଗରୁ ଆମେ ଏମିତି କେହି ମାନେ ପଢିଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଆମକୁ କେହି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କାଲି ମୁଁ କହିଲି ତ କାଲି ଆମ ସେସନରେ କହୁଥିଲି ଯେମିତି କେମିତି ପଏଣ୍ଟସ୍ କୁ ମନେ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପରେ ଆମକୁ ସଜେଇବା ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା କି କାଲି ସେ ମତେ କହୁଥିଲା କି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେହି ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି କି ଏଟା ମନେ କେମିତି ରଖିବୁ ସବୁ ଆସିଲେ ପଢେଇକି ପଳେଇଗଲେ ସବୁ ପଢେଇକି ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ପଢି ପଢି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଟାଇମରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫର୍ମାଟରେ ମନେ ରଖୁନୁ ତ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମେ ବସୁଛ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କି ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଲେଖିବି ଆଉ ତୁ ଜାଣିଥିବ ଓଡିଶାରେ ତ କଣ ହାଲତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଟିକ 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 5 ଟିକ 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 6 ତ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପିଲା ବି ଶିଖିବେ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଡୋଣ୍ଟ वरी पेशेंस रख ठीक है आज देखो तुम बहुत जिन शिखले नहीं मत केମିତି आंसर को बनेइबो ना नहीं देखो टेक वन स्टेप एट अ टाइम डोंट ट्राई टू बी रजनीकांत एंड सब गोटे दिन रे करबी सेमती हवार नहीं फास्ट एंड फास्ट मेक यू लास्ट स्लो एंड स्टेडी विन द रेस पेशेंस रख सब में शिखै देबी हम देखो मेंटरशिप तुम पचारे पिला भी किछ अछंती मु ताको सब जिन गोटे कहिछि हड़बड़ी हुआ ना आराम से धीरे धीरे कर माने ये आंसर राइटिंग आमु करिया पे 6 मास लागिछि मु ए सब शिखिछि जो तुम देखुने कि छोटो छोटो जिंस यू विल नॉट बिलीव कि आमे पूरा 6 मास पूरा लिखिछु बसिकी माने एते मेहनत करिछु बहुत जिंस पूरा मते फास्ट लागुतला मु आंसर राइटिंग भलो करि पाउनी काहे ना मु आंसर राइटिंग करूनी परे मते जणा पड़ला कि मोर आंसर राइटिंग भल लाइ काहे ना मोर कंटेंट भी भलसे सजाडा हेनी मोर नॉलेज बहुत अछि कहला नॉलेज मोर एते थिला से समय एबे टिके कम हेलानी काहे मु पढ़ा पढ़ी करूनी बेसी मोर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स सो सेतबे मोर नॉलेज बहुत थिला बट दे आर नॉट इन ए स्ट्रक्चर वे दे आर रैंडमली स्कैटर्ड so that is what I am emphasizing
to you people. So you should have low, even if you are having low amount of knowledge, little bit of knowledge, you can clear the exam. Thing is that it should be in a structure, in a random, it should not be random, it's a structure in a systematic way. Then only you can write a good answer. A random scattered बस पढ़ते रहे, बस आया fundamental right we have borrowed from the USA, it's a bill of right, article 12 to 35, खत्म. क्या मतलब है उसे? You should ask the question yourself, why I am reading this. Then you will find that I am reading this because this can be my introduction. Whenever there is a question fundamental right, it is in part, which part? Part 3 of Indian Constitution from to Article 12 to Article 35, and it is inspired from the Bill of Right of USA. That is what your introduction, that is the reason I am reading it. So जब भी whenever you are reading any portion of anywhere, ask yourself मैं क्यों इसको पढ़ूं, मेरे को utility क्या है, then only you need to read that. Okay. ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା. I think overload ହେଇଗଲା ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କର ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ information. ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିହେବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଡିଂ ବନେଇବ, ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଯଦି ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବାଲା ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମେ କହିବ କି ସାର୍ କହିଲେନି. ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିପ୍ ଏ ଚେକ୍ ଅନ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ପାୱାର ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଓକେ, in amending constitution. So arbitrary power mane eti kono, so you can write how Supreme Court, you can give a heading, how Supreme Court is keep a check on the or misuse or arbitrary power of the parliament. Then you need to give this heading, exact heading what it is asking na. Then within that you can draw a diagram. If you are given this heading, then you can draw this example with example na. You can give example some of the law passed by the parliament. You can give example 99 Constitutional Amendment Act na. What is the provision of 99 Constitutional Amendment Act, anyone? NJAC. So here it is talking about critically examined. So that means you have to also criticize. Not by not always arbitrary misuse. Sometimes Supreme Court also misuse na. You can talk about 99, so they have amended, so it is rejected. Then you can talk about 39 Constitutional Amendment, अगर आपको याद होगा. What is 39? They have taken away the judicial review power. ठीक है, पढ़ो ठीक है भलसे बाबा, ठीक है भलसे in depth ठीक है पढ़ो, ठीक है भलसे पढ़िले बुझिबो. 39 रे को हैला कि election of president, I think prime minister and speaker, they are away from the judicial review. So Supreme Court कहले कि no, you cannot take away judicial review power, which is the basic structure of the constitution. So you have to write all these things and give one example. So that is what it is talking about. So Supreme Court of India check the arbitrary power of the parliament amending the constitution. So you can say sometime they are doing that and sometime they are not doing, because in our Indian constitution it is strict separation of power. It's like a separation power of there. So Supreme Court cannot always act against the executive because they have to respect their own boundary also. So you have to give some example where Supreme Court is checking the arbitrary power if it is not violating the basic, if it is violating basic structure, and on the other hand, if it is not violating the basic structure, then they cannot do anything. So parliament can enact any law na. You can give example sometime, जैसे कि बताता हूँ. You can give this example of the Keswanand Bharati case. So Sajjan Singh case, Supreme Court said what? Parliament cannot amend the fundamental right, but Parliament amended this provision, and in Keswanand Bharati case they have accepted it. So that means it is not always stopped. The Supreme Court cannot stop it always if it is not violating basic structure. If it is not violating basic structure, Supreme Court cannot stop that. Na? Only Supreme Court restrict if it is violating the basic structure. You have to write a balanced answer. Some area where Supreme Court is acting as a restriction on the arbitrary power of the parliament, but some area it cannot do if it is beyond the scope of basic structure of the constitution. आप तमें देखी पारती हो बहुत जगह जेमती कि some of the time president rule is being imposed. So they are Supreme Court is speechless, cannot do anything.
some of the time. I think you can also give example of Supreme Court, though they are ready to do that, but already there are so many cases are pending, so it is not possible for them to do that in a justice. जैसे मैं आपको बड़ा बड़ा एग्जांपल ଗୋଟେ ଦଉଛି, बिहार रे कोन हैतला ଗୋଟେ ଥର ମାନେ कोन कहलो प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देथिले सेंट्रल गवर्नमेंट के, then Bihar state government file a case in Supreme Court and this case had after 6 years, जब वो गवर्नमेंट ही है ही नहीं, तो that time Supreme Court said that central government misused the power to dismiss the government but we cannot reinstate the government, क्योंकि 6 वर्ष जाई सारची से माने जो एमएलए थिले तांको पीरियड ही खत्म हो गेला. तो do you think that in that condition Supreme Court is going to stop the arbitrary misuse of power? देखो parliament or government can do instant any changes, but you have to go Supreme Court, case will be pending, it will continue for 3 or 4 years, at the end you will get the result. So that is also the problem. Supreme Court is having restriction or limited in terms of because of problem pendency of the cases also, and everyone is not equally empowered to go that also, na? For example, to check Supreme Court, to check you have to file a case, so everyone is not that empowered to file this case also, so you have to explore diversified point. In some area, no doubt Supreme Court is restricting the arbitrary of the power, but in some area they can't do, even because the restriction of the separation of power restriction is there. Second, you can talk about already there is a high pendency of cases, so if you have so much pendency, then it's very difficult for you to, then next is very less awareness. Okay, you can explore points like that. Okay, ठीक है ना रश्मिता? ଆଜ୍ଞା sir. लेख ଆଜ୍ଞା. କିଛି ନାହିଁ, लेख ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା डिस्कशन କରିଦେବି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇडिଆ ଦେଇଦେଲି. Diagram you can draw after putting a heading, but if there is a 3 section in an answer, you should not draw diagram in each and every section. 1 or 2 section you should write diagram, 1 or 2 section you should write. मैं आपन मानकु आ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛି, देखो diagram ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ यूज करू, use diagram whenever you have less information. Use diagram when you have less information. So for example, you don't know, you just know heading, just write like that, na? One word. Second, have more point to write in small time. And whenever you have lot of points, lot of examples, क्या करोगे? Point format. Okay? Yes, sir. Is that okay? I think Yes, मैं sir. recording को off. I'm just stopping the recording. I'm normality କଥା ହେଇଯିବା. मैं କଥା ही परिया किस problem नहीं है. No, whatever we have discussing, I'm going to upload that in our portal, like application also. So if you want, you can watch that also later on. जो भी हमारा session discussion होगा, सब जगह recording भी रहेगा. Okay? So कुह तमनगर कि सजेशन अछि कि कहयार अछि. I think 5 मिनिट और रहला, 5 मिनिट में end करिया because it's 2 hour movie थकी गलेनी. No, it's very difficult to speak continuously, na? Sir, Sir, କାଲି ତ हाँ कुह. One by one. କାଲି ପାଇଁ ତ କଣ? काली हमें कौन କାଲି करिया ପାଇଁ तमे ତ कुह. कौन करिया कुह. sir ଟିକେ ମାନେ ଓଭରାଲି ସବୁ ଡିସ୍କସ କରିଦେବେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଟପିକ, ମାନେ Sir, ଯୋଉଟା କି essay और ethics question. ଡାଇନାମିକ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଜିଲି ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପଢେଇଦେବେ. ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବି ତମ ପାଇଁ କୋଟା problem. That is what big issue for me, na? ठीक अछि मते कहि देबे काली एनीवे मु भलो ना नोट्स पोस्ट बनेबी. ठीक अछि मु काली 4 घंटा गोटे अछि बसी पडिबा गोटे 30-40 पेज कवर करबा. ओके କାଲି ମାନେ ସେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଡି sir हां को वन मिनिट मु कहली कि काली हमर टाइम होची 2 टा रु 6 टा.
तो इतरा हम दीटा 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 को कर दवा 2 आवर प्लस 2 आवर है कि मझे मत टिके ब्रेक दरकार हम मे बी 4टा रु हम ब्रेक नहीं जा 4:30 15 मिनट ब्रेक नहीं जा मुझे चा पा पी देवी फिर हम स्टार्ट करिया ओके एवरीवन इज ओके यस सर। देखो देखो बहुत मेहनत दरकार तुमको लागू जो 4 घंटा करने ना मत पूरा बसिया पड़ो 5-6 घंटा माने मते बनेगा पड़ो कंटेंट डॉक्यूमेंट तो जब तुम पढ़नी सीरीयस नबनी बुझीपार ना मो निजर मोटिवेशन खराब हो जहाँ भी मुझे पढ़ाऊँ बहुत मेहनत करा पड़ो आ पढ़ला बेले सीरीयस होगी बस पेन पेपर धरिकी बस एमती नहीं कि बस चल रहा यूट्यूब मूवी देख लेते हैं नॉट लाइक दैट ओके हमर टाइम टा मते कहले फिक्स केतले करबा सो सैटरडे 8 to 10 to 4 ना चले 2 to 6 चलेबो सर 2 to 6। हां 2 to 6 मते मझरे ब्रेक दरकार पड़िबो हला कि हाँ आमे भी टिके फ्रेश हे जो आपन भी हे ए टिके ब्रेक नबा बंद कर दो पुणी आसीबा हला कि मे बी 2 6 तक मु जतबे कथा हुए ताडो अधिका नहीं सबले मैं तो 4 घंटा कहूँ 4.5 घंटा हो तो जा भी हो आमे गोटे मिनिमम गोटे सप्ताह गोटे 6-7 घंटा क्लास हमर हबो ओके सर मो यस पर टाइम कांस्टेंट बहुत माने यार ऑफिस यारे पढ़ा पढ़ी मते बहुत टेंशन लागो तो याठू माने कोन विदिन करि पारि टाइम मते को सरियो ना मते नहीं। मते एति खाली को मते एति खाली को तम पाई मु 10 टाइम्स टाइम कम कर देली तमे लक्ष्मीकांत पढ़ी था 1000 पेज ताको मु कम करी तुमको ये कंटेंट करी मु आउरी कंप्रेस कर देबी एटा 50 पेज रे भी हे जीवो एटा कंटेंट रे किछ ना नाही एथरे लक्ष्मीकांत हिसाब रे लक्ष्मीकांत रो पेज को मु कंपेयर करबी बुक सहित ताले 40 पेज रे हे जीवो याठू ना हम कोन कंटेंट करि वगैरह पारि सब याठू ठीक ठाक अछि माने आओ तुमको हमरे तुमको देखो हमरे देखो एफर्ट देखो कथा बुझा ट्राई कर तमे तमे आसिला परे तुमको एफर्ट डालिया पड़ो तुमको भाविया पड़ो मु जो जगह अच्छी दिस इज दी हेल I want to come out of the hell to heaven. So to come out of the hell, you have to struggle. आज्ञा सर एटा हाँ तो मो लाइफ एंड ही चलछि। समस्त लाइफ रे चलिया दरकार ताहले ही मनीष आगु बढ़ियो सो यू नेवर सी इंप्रूवमेंट विदाउट स्ट्रगलिंग हाँ आउ कहली आई थिंक खगेश्वर किछ कहतले कोन प्लीज देखो मु तुमको समरी नोट्स दे देली तब आगु मेहनत करिवे ना केमिति हबो आपण कहबे कि मते के पूरा ग्राइंडर एकदम ग्राइंडिंग करके दे दो पूरा जूस बड़ी पी देबे एमती हबो ना एंड वन थिंग मु केबे सपोर्ट करेनी काकू माने स्पून फीडिंग एटा मन लगता हो मते के मागिले मु दिएनी बट हाँ मु एटा दोछि काई ना स्पून फीड नो आई एम गिविंग इट बिकॉज आई वांट 10 टाइम्स रिवीजन फ्रॉम यू ओके ना सर सब सब सब्जेक्ट रो प्रोवाइड करते हैं। हाँ सब सब्जेक्ट अछि मो पाखरे मो पाखरे किछि जिंस नाही जेमति कि मोर जोटा एक्सपर्टीज नाही इकोनॉमी बट हाँ इकोनॉमी बनै देबी डोंट वरी मे बी एथिक्स मो पाखरे ऑलरेडी अछि एसए मु आपन बहुत हेल्प कर देबी सोसाइटी अछि मो पाखरे पॉलिटी अछि मॉडर्न हिस्ट्री अछि जियोग्राफी अछि मो पाखरे एनवायरनमेंट रे मु आपन को ऑलरेडी हम नोट्स में पब्लिश होउची देखितबे ताको हमें समराइज करके दे दो मेंस पई तापरे करंट अफेयर नोट्स में आपन को दे देबी ओके करंट अफेयर notes also we are preparing matlab lot of efforts we are putting it's like before taking your class so there is severe discussion for 1 hour we had discussed with how to make this mains current affair well bahut I cannot explain you a lot of things are going on even if I'm taking the class there are a lot of essays of this that so we are doing it don't worry just have little bit of patience and support definitely we'll do that ha khagesar ko सर एसए और एथिक्स ha विषय रे सर बिल्कुल बिल्कुल खगेश्वर टिके आमे एसए रो मु काली गोटे ओपन सेशन नवा पई चाहूची केतले कहले काली गोटे 8टा रे भी हमर गोटे सेशन नवा होचन ओपन सेशन गोटे हैला कि हाँ सर एनीवे मु डिस्कशन एठी भी करबी डोंट वरी मु आम मानकर माने पिला मु ओपन सेशन गोटे करूची काली गोटे एटा सरीबो 6टा रे 6टा सइला परे मे बी 8टा या फिर 8:30 रो हम गोटे सेशन करिवु गूगल मीट रे तो सेठी मु भाबुची गोटे एसए ऊपर मु डिस्कशन करबी आई थिंक आपण माने आसीबे बहुत भलो होता देखो देखो मु तो एनीवे एठी डिस्कशन करबी यदि आपण आसीले भलो होला गोटे एडिशनल मिल जियो कोन अछि आसीबे भी भलो हबो आसीबे ना नहीं बता हां हाँ सर आज्ञा सर काली हमर हां देयर विल बी ओपन सेशन ऑन गूगल मीट सो basically how to write a good essay
So there I'll be going to discuss about everything. If possible, I'll do the recording of that in my laptops also. So I'll upload that. But anyway, we are going to discuss here also because this is our core group. Everything we are going to discuss. But देखो, if you are see that there, then it is good thing that we'll do some advanced discussion. Na? देखो, the more we utilize the time in an efficient way, it is going to be more benefit for us. Na? देखो, मो पाखे टाइम से अच्छी तुम यदि भलसे मोटू टाइम खोल तो मुझे आपको वैल्यू एडिशन देवी ना. And please don't share this link with I think anyone. So they are coming and going, so it's create a lot of disturbances. Okay. So मैं किसी के साथ शेयर मत करना. हाँ प्रभात बताओ. प्रभात. Sir, actually, sir, I started reading after a gap of 15, 16 years. In the meantime, Okay. I always wanted to prepare for the UPSC, but I was in the doubt कि मीडियम कौन सा ले, हिंदी ले, इंग्लिश ले, क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या वापस नहीं. दो मेरा ऑब्जेक्टिव नॉलेज ठीक ठाक था, but I couldn't think of the UPSC. And with this मेंस राइटिंग प्रोग्राम सर जो क्लास के पहले करवाते हैं उससे काफी प्रूव हुआ. मतलब I was not a writing person. तो No, फर्स्ट you टाइम can मेरे को फिर improve. Don't आंसर worry. राइटिंग लिखना वो I was like You, I was likened with the writing answers. प्रभात तो actually this is for actually OPSC main student. तो मैं आपको invite कर दिया, मतलब बच्चे को बुलाया, but please हम वहाँ बात कर लेंगे. मुझे पर्सनली कॉल करना, बात कर लेंगे. ओके ओके ना, पर्सनली आप बात कर लेना, या फिर हम आई थिंक ये पॉसिबल वी कैन हैव डिस्कशन देयर आल्सो. ठीक है, बस एबे टिके को कहले टिके वो ओपीसी पिला बारे अछन यार ये तांगर एबे एग्जाम अछि मेंस. सो सॉरी उनका अभी मेंस है, थोड़ा बाद में उसको बात कर लेंगे ना. श्योर सर मुझे मैं आप कॉल कर पर्सनल लेना. मुझे आप कॉल कर लेना उसके रिगार्डिंग, वी कैन हैव डिस्कशन. ओके ओके सर गुड नाइट. हाँ गुड नाइट. सो और कोई डाउट है या फिर एंड करें अभी. अगर आपने जो एडिट किए, जो जैसे मेंशन किया ना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का क्या क्या स्ट्रक्चर होना, ये वाला नोट्स व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्या सर, जो हमारा ग्रुप है. हाँ वो नहीं, मैं आपको नहीं, पर्सनली भेज दूंगा ये टोटल वाला. पीडीएफ नहीं. ये चीजें तो हाँ, मैं आपको दे दूंगा, जो ये तो मैं 4 या बना 5 दूंगा. ये तो डोंट वरी, ये वट एवर आई हैव डिस्कस हियर इट विल बी, यू विल गेट दैट इन ए गुड फॉर्मेट. डोंट वरी, ये आप टेंशन मत लो, मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको लगता होगा आई एम जस्ट सेइंग वट एवर आई एम सेइंग हियर इट विल बी प्रिपेयर्ड इन ए गुड वे. रुको मैं देखौछि जहाँ भी तुमको मैं कथा होछि यू कैन सी हियर देयर इज ए प्रॉपर फॉर्मेट. आई एम नॉट मेंटेनिंग इट रेगुलरली. देखो जहाँ भी तुमको कहूछि इट इज मेंटेन इन ए प्रॉपर वे. Don't worry, I'll provide that in a good way, good PDF. It is not like random. ये एमती मु लिखिक दिए नहीं, मोर सब जिनस स्ट्रक्चर एंड गुड नोट्स, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा. हाँ एनीवे I'll share that ये also, like no that it is going to be helpful also. So I'll share that in both our group. But हाँ मु जो जिनस पढ़ा है सबूर नोट कंप्लीट एंड टू एंड एवरीथिंग विल गेट, बट इट्स बेटर टू शेयर. हाँ को आउ किसी डाउट अछि आदित्य को.